Hello everyone. First of all, I would like to introduce our institution. TLS PG College is run by Part Section Samiti, an institution dedicated to serve the nation through education, research and training. The college was established with a dream of making quality higher education available to the youth of Chhattisgarh and primarily to the deprived sections. It is a private self-financing college which is working for holistic development of rural and backward youth for 2 decades. This college was established in 1997 in the memory of late Shri Dashrath Lal Sharma ji. With over 7 acres of green and new age college campus, with state-of-the-art infrastructure and modern facilities for the students, we provide a healthy and pleasant academic environment for the leaders of tomorrow. Thank you so much. Once again, good afternoon all and namaste from India. On the behalf of organizing committee, I, Dr. Samiksha Sharma from Department of Biotechnology and Research and Development Cell, cordially welcomes you all in this international e-conference on the topic Innovative Entrepreneurship for Society, Opportunities and Challenges, organized by DLS Livelihood and Internal Quality Assurance Cell, DLS PG College, Bilaspur, Chhattisgarh, India. The chief guest of this event is respected Mr. Sunil Parda sir, Secretary, Chhattisgarh Small and Ancillary Industries Association. I sincerely welcome you, sir, for this event. Our chief patron of this conference is Shri Basant Sharma ji, Chairman DLS PG College, Bilaspur, Chhattisgarh, and patron Shri Pratap Pandey sir, Principal DLS PG College, Bilaspur, Chhattisgarh, and co-patron is Mrs. Nisha Sharma ma'am, Director DLS PG College, Bilaspur, Chhattisgarh, India. Today we have 5 speakers as resource person. Mr. Christian Hoyos, co-founder NetMinds Belfast UK, Ms. Laura Burnell, co-founder NetMinds Belfast UK, Mr. Kamaljit Kumar, founder Jabros Equal Sign and Online Padho, Gurugram, Haryana, Mr. Shashank Tiwari, founder Hanisha Technologies and 24 Kitchens, Gurugram, Haryana, and Mr. Nitin Ranjan sir, founder AAI Event and Business Consulting, Patna, Bihar. I welcome you all eminent speakers and delegates from India and all over the world and bid you a very warm welcome from India. We are indeed honored to have you here with us. It's our holy tradition to worship our goddess of wisdom, Ma Saraswati, before any important event. So let's dedicate a prayer to Ma Saraswati. For that, I would like to invite Miss Sanskriti Shastri Madam for Saraswati Vandana, followed by our Rajgit. Rajgit is a state song of our beloved state Chhattisgarh and lightning of virtual lamp. Over to you, Sanskriti Madam.
मेह शेष जाड्या पापैरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती हा पखारे तोरे पैया जय हो छत्तीसगढ़ भुइया हार हार धव तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्या पापैरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती हा पखारे तोरे पैया जय हो छत्तीसगढ़ भुइया महू पावे परो तोरे मैया सो है बिंदियासनी घाट डुंगरी पहाड़ चंदा सूरज बने है तोर नैना सुनहा धाने के अंग डुगरा हरियर है रंग तुर बोली हवे सुघर मैना अजरा तोरे डोलवे पुरवैया जय हो छत्तीसगढ़ भुइया रईगढ़ हावे सुघर तोरे मोर मुकुट सरगु जाओ बेला से पुर है बईहा रईपुर कनिहा सही घात सुघर भवे दुर्ग बस्तर सोहे बैजनिया नांदे गाँव नवागर धनिया महू पावे परो तोरे भुइया अर पापैरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती हा Thank you so much, Sanskriti ma'am. Now, I would like to invite our principal, Shri Pratap Pandey sir, for his inaugural address. हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? थैंक यू समीक्षा मैम। आज डीएलएस महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ देश विदेश के बहुत सारे अतिथि और विद्वान जुड़े हुए हैं। उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय हमारे साथ हैं आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री सुनील मारदा जी, सचिव छत्तीसगढ़ लघु व सहायक उद्योग संघ के, चीफ पैट्रन हमारे मार्गदर्शक श्री बसंत शर्मा जी, चेयरमैन डीएलएस महाविद्यालय से, संस्थान की निदेशिका श्रीमती उषा शर्मा जी, साथ ही हमारे विशिष्ट वक्ता मिस्टर क्रिश्चियन ओयोज, मिस्टर लॉरा बर्नल,
Mr. Kamaljeet Kumar, founder, Jebros, Equasign and Online Photo Gurugram. Mr. Shashank Tiwari ji, founder, Anisha Technologies and 24 Kitchens, Gurugram. Mr. Nitin Ranjan ji, founder, AAI Events and Business Consulting, पटना बिहार से। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन डीएलएस महाविद्यालय के द्वारा। ये कॉलेज जितने भी जो नवाचार है, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर के मामले में हम कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाओं के साथ। इसी कड़ी में आज का यह इंटरनेशनल वेबिनार एक मील का पत्थर साबित होगा। इस वेबिनार के द्वारा आए हुए सुझाव हमारे देश के, हमारे समाज के युवा जगत को और अधिक स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे, सक्षम कर सकेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकेंगे। मैं ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी बधाइयां पूरी टीम को देता हूं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words. Now, I would like to request our Chief Patron, Shri Basant Sharma ji, Chairman DLS PG College, Bilaspur, Chhattisgarh, India, for his kind words. Over to you, Sharma sir. हेलो। Yes, sir, you are audible. हेलो। Yes, sir, you मेरी are आवाज आ audible. रही है समीक्षा जी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आज के इस इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस जो कि डीएलएस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बिलासपुर के लाइवलीहुड, आईक्यूएसी और कैरियर एंड काउंसलिंग सेल की ओर से आयोजित किया गया है, और आज के इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस का जो विषय है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सोसाइटी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि इसमें इनोवेटिव जुड़ा हुआ है तो हम इसको कोविड-19 के संदर्भ में भी लेकर चर्चा कर सकते हैं, और हम करेंगे। आज के इस इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट आदरणीय मिस्टर सुनील मारदा जी, जो कि गौतम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोप्राइटर हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ लघु एंड सहायक उद्योग संघ बिलासपुर के सफल और ऊर्जावान सचिव हैं। हमारे कॉलेज के आदरणीय प्रिंसिपल श्री प्रताप पांडे जी, डायरेक्टर श्रीमती निशा शर्मा जी, हमारे जो ऑनरेबल रिसोर्स पर्सन हैं मिस्टर क्रिस्टियन होयोस, को फाउंडर नेट माइंड्स बेलफास्ट यूके, मिस लौरा बर्नॉल, को फाउंडर नेट माइंड्स बेलफास्ट यूके, मिस्टर कमलजीत कुमार गुरुग्राम हरियाणा से हैं, मिस्टर शशांक तिवारी जी गुरुग्राम हरियाणा से हैं, मिस्टर नितिन रंजन जी पटना से हैं। हमारे इस इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर मिस्टर रजनीश श्रीवास्तव जी, डीएलएस कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, टेक्निकल टीम, ऑफिस स्टाफ, मिस्टर सुमित दुबे जी, सुनीता जी, राकू जी, नीतीश जी और सभी वे सारे लोग जिन्होंने इस इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने में अपनी मेहनत और मशक्कत दी है। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सादर अभिवादन करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इस कोविड-19 के दौर में इस महत्वपूर्ण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों और देश के विद्वानों और प्रदेश के इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। उद्यमशीलता
आज देश और दुनिया की आवश्यकता है। कोविड-19 के इस दौर में पूरे देश की इकोनॉमी पर, उद्यमशीलता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। वैसे भी हमारे देश में उद्यमी बनने की दिशा के लिए कोई बहुत एजुकेशन स्तर पे कोई व्यवस्था नहीं है। युवा एजुकेशन के बाद क्या करें, किस दिशा में जाएं, जॉब्स जो हैं वो बहुत सीमित हैं और युवाओं के सपने आसमान की बुलंदियों पर जाते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस और जानकारी के अभाव में वे भटकते रहते हैं। मैं आज के चीफ गेस्ट सुनील मारदा जी को जरूर कोट करना चाहूंगा। खुद वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इस दिशा में कई वर्षों से केडिया साहब, सुनील जी और इनकी पूरी टीम उद्योग मेला या अन्य माध्यमों के माध्यम से युवाओं को उद्यमी बनने की दिशा में न केवल प्रोत्साहित करते रहे हैं, बल्कि उनको दिशा भी देते रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सामान्य परिस्थितियों में भी और कोविड-19 के इस दौर में भी जो बड़े बदलाव आए हैं, हम सबकी जीवन शैली, जीवन दर्शन बदला है। आर्थिक क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं, बड़ी जरूरतें हैं और मैं समझता हूं कि अभी की वर्तमान स्थिति पूरी दुनिया में और देश में एक समान संकटों के दौर से हम गुजर रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों के लिए, प्रतिभागियों के लिए, अन्य समस्त युवाओं के लिए उनकी क्षमताओं और स्किल के अनुरूप उद्यमशीलता की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी आज प्राप्त होगी। हम सब सीखेंगे, सुनेंगे और अमल में लाएंगे। सरकारी क्षेत्रों में, उद्योगों के क्षेत्रों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, व्यापार के क्षेत्र हैं, वहां सभी को सामूहिक रूप से युवाओं को इस दिशा में आगे लाने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है, एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, एक काउंसलिंग की आवश्यकता है जिसमें वो क्या कुछ कर सकते हैं, किस दिशा में जा सकते हैं। मैं सभी प्रतिभागियों के साथ ही अन्य लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आज के ई कॉन्फ्रेंस का वे भरपूर लाभ लेंगे। पुनः मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बधाई देता हूं। स्पेशली शशांक तिवारी जी को मैं कोट करना चाहूंगा कि इन्होंने इस कोविड-19 के दौर में बिलासपुर जैसे छोटे से शहर में 24 किचन से एक शुरुआत की, जिसका लाभ निश्चित रूप से न केवल उपभोक्ताओं को मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है और इस आपदा में अवसर को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य किया है। युवा हैं, शशांक जी को मैं बधाई देता हूं और पुनः इस इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस के सफलता की कामना करता हूं। पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं, उनसे हमें बहुत लाभ मिलेगा। सुनील जी से न केवल इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बल्कि इसके बाद भी जो युवा उद्यमी आगे आना चाहेंगे, वो और उनकी पूरी टीम उसको सहयोग करेगी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू समीक्षा मैम। Thank you so much, sir, for your kind and inspiring words. Dear participants, we rarely get this kind of an opportunity to listen to the words of great personality like Mr. Sunil Marda, sir, Secretary, Chhattisgarh Small and Ancillary Industries Association, Bilaspur, Chhattisgarh. So let's have the privilege of listening to him. It's my honor now to invite our respected chief guest, Sunil Marda, sir. Over to you, sir. नमस्कार। डीएलएस पीजी कॉलेज के सम्मानीय चेयरमैन, समाज सेवी, परमानेंट युवा, आई विल कॉल हिम, श्री बसंत शर्मा जी, प्रिंसिपल श्री प्रताप पांडे जी, डायरेक्टर श्रीमती निशा शर्मा जी, कन्वीनर रजनीश श्रीवास्तव जी, आज के अन्य वक्ता, रिसोर्स पर्सन्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं आज की इस आयोजन समिति को साधुवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अत्यंत सामयिक विषय पर इस वेबिनार एवं चर्चा को ऑर्गेनाइज किया है।
इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। पूरा विश्व इस वक्त महान रिसेशन विषम प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इस त्रासदी में इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट हैज नोज डाइव टू अ बॉटम लेवल। मगर इतिहास गवाह, मुझे दिशा देने का आदेश दिया है माननीय बसंत शर्मा जी ने, मैं दिशा दे रहा हूं। इतिहास गवाह है कि it is bound to rebound. So this is the best time to prepare yourself to rise and to ride the upward wave. Job creators are the need of the hour. Entrepreneurship is the call of the day. Innovative entrepreneurship is the only sure shot path to success. Well chosen subject, आयोजन समिति। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 1979 के मैकेनिकल इंजीनियर बिट्स पिलानी के बैच से पास होने के बाद में 1981 में मैंने बिलासपुर में अपने चाचा जी के साथ गौतम प्लास्टिक्स नाम की फैक्ट्री डाली और पिछले 40 सालों से सिर्फ पाइप बना रहा हूं, प्लास्टिक के पाइप बना। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ऑर्गेनाइजर्स ने गलत चॉइस कर लिया है, पाइप ही बना रहा है 40 सालों से। मगर जब मैं अपने पीछे घूम के देखता हूं तो इन 40 सालों में हमने जो इनोवेटिवनेस लाई है अपनी फैक्ट्री में, अपने उद्योग में जो लाई है, उसमें प्रोडक्ट मिक्स, सामयिक चेंजेस फ्रॉम एचडीपी टू पीवीसी टू पीपीआर टू ओएफसी डक्ट्स टू स्प्रिंकलर्स टू ड्रिप, हमने इतने चेंजेस किए। मैनेजमेंट एज पर द नीड ऑफ द आवर हमने अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज किया, प्रोडक्ट्स को चेंज किया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चेंज करी, और ये हाल है कि नाउ आवर 40th ईयर इज द मोस्ट सक्सेस promising best year we are finding। साथ ही साथ में ये भी देखता हूं कि हमारे साथ में जो उद्योग शुरू हुए थे इसी प्रोडक्ट के, वो या तो बंद हो गए हैं या उन्होंने लाइन चेंज कर ली है। तो आई विल से कि इनोवेटिवनेस हमने अपनी फैक्ट्री में अच्छी रखी, शायद इसीलिए चल रहे हैं, और इसलिए आई विल से आयोजन समिति को कि नो, योर चॉइस वाज नॉट बैड। मैं थोड़ा सा इतिहास दिखाना चाहूंगा उद्योगों का। 40 साल पहले जब हम ये फैक्ट्री यहाँ डालने आए थे तो हमारे पास सिर्फ 3 चॉइस हुआ करती थी, या तो प्रोफेशन सीए बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या नौकरी कर लो। दूसरी, परिवार की दुकानदारी में लग जाओ, उनकी दुकान चलाओ, या चाचा ताऊ द्वारा की सेट करी हुई फैक्ट्री जैसी ही फैक्ट्री टाइप इंडस्ट्री डाल दो। Communication, traveling, information availability was very poor. Service industry was negligible. Ladies तो पापड़ बड़ी अचार से ऊपर उठ ही नहीं सकती थी। Everything was manual. लाइसेंस राज बसा था। मुझे याद है कि अपनी फैक्ट्री डालने के लिए, सीमेंट खरीदने के लिए मुझे डीआईसी में जाकर के परमिशन और कोटा लेना पड़ता था। जितना उन्होंने कोटा दिया उतना मिला, बाकी ब्लैक मार्केट से खरीदा। टेलीफोन के लिए एमएलए को अप्रोच लगाना पड़ता था। मगर इन द लास्ट डिकेड, द आईटी बूम इन द पास्ट डिकेड, द ओपनिंग अप ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस and the speed with which connectivity and data is available now, 4G, 5G, the world has become a small place. धीरू भाई का सपना, धीरू भाई अंबानी, हमारे उद्योगपतियों के महारथी का सपना था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वह सपना अब साकार हो गया है आप लोगों के। कोई समस्या है, गूगल कर लो। हमारा हिंदुस्तानी भाई सुंदर पिचाई, शायद भगवान को भी कुछ पता लगाना होता होगा तो वो गूगल ही करता होगा। You are, now I am telling you young people, you are a lucky lot. आप भाग्यशाली हैं, मौकों का खजाना आपके सामने है। चाहे लोकल लेवल पे ले लो, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड, सारा मैदान आपके सामने खुला है। सर्विस सेक्टर की मजबूत डिमांड है। एक ही आह्वान आपसे, गो grab the opportunity. The time to show your entrepreneurship is now. वॉरेन बफेट, जो स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े एनालिस्ट माने जाते हैं, वो कहते हैं कि you should buy shares when the other people are selling it. अर्थात recession is the best time to buy or invest. तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि
दुनिया में माहौल बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, जानकारियां बहुत अच्छे से प्राप्त कर। तो चलिए इस दौरान हम देखते हैं कि अपने देश में हिंदुस्तान की क्या हालत है। बिकॉज वी हैव टू डू समथिंग हियर ओनली, तो हम हिंदुस्तान की हालत देखते हैं। पिछले 3 सालों में भारत ने एक ऐसी करवट ली है कि अब शक्ति का स्रोत बन गया है, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली। अच्छी खासी स्ट्रेटेजी के तहत भारत एक मित्र देश के नाम पर जाना जाने लगा है। और कोरोना के बाद से तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस में टॉप पर आ गया है। करोड़ों करोड़ रुपए सारे भारत में इन्वेस्ट होने वाले हैं। इसके ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस मौके को ताड़ा। स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया और अब कोरोना के बाद आत्मनिर्भर भारत, सबसे बड़ी बात, हम आत्मनिर्भर बने का जो आह्वान किया है और उसके लिए उन्होंने जो योजना बनाई है वह इन अपॉर्चुनिटीज को और उड़ान देता है। इंडियन गवर्नमेंट ने आभास किया कि जहां एक और बड़े बड़े मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टमेंट्स की जरूरी है, वहीं छोटे और मझले हमारे जैसे लोगों के एमएसएमई की महत्ता उससे कहीं ज्यादा है। आपको बता दूं कि यदि 100 करोड़ का एक बड़ा सेक्टर 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो 100 करोड़ का एमएसएमई लगभग 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो यह सेक्टर पनपे फॉर ए जॉब, employment and overall growth, MSME sector is a very important sector. यह सेक्टर पनपे, इसके लिए स्पेशल पैकेजेस, सब्सिडीज एंड लोन अवेलेबिलिटी भी गवर्नमेंट ने बहुत आसान कर दिया है। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट ने भी एमएसएमई एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम सब आते हैं, को ओपन करके हमारे सामने एक और बड़ा मैदान खोल दिया है कि आओ, दौड़ो, उड़ो, फैलो, जो जितना बढ़ सकते हो बढ़ो। तो चलिए, भारत में भी माहौल बहुत अच्छा है, वर्ल्ड में माहौल बहुत अच्छा है। तो अब हमारे पास तो ये प्रॉब्लम है कि हमें कौन इस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे लिया जाए। तो मैं एक्चुअली और बहुत कुछ तो नहीं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताता हूं कि यदि आपको कुछ कार्य करना हो तो उसमें क्या क्या प्रायोरिटीज को देखना चाहिए। सबसे पहला तो यदि आपकी फैमिली में कोई बिजनेस है या कोई प्रोडक्ट से आप डील करते आए हैं बचपन से, तो उसमें आपको बड़ी सहजता मिलेगी। आपको उसके बारे में फर्स्ट प्रायोरिटी तो शायद उसको रखनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट प्रोडक्ट, और उसके बारे में आप बहुत जानते हैं, तो जल्दी से अडेप्ट भी कर लेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरा बेटा अभी अपनी इंजीनियरिंग और एमबीए करने के बाद फैक्ट्री में है, एंड आई नो जो इसी में रहा हुआ है, तो अब इतना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करके द 41st ईयर फॉर माई इंडस्ट्री विल बी इवन बेटर देन द 40th। यदि ऐसा स्थिति आपके साथ नहीं है, फैमिली बिजनेस नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन विल कम कि यदि आपको किसी प्रोडक्ट, सबसे पहले तो आपको उस प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए जिस फील्ड में आप घुसना चाहते हैं। तो एक्सपोजर, यदि आपने कहीं जॉब किया है या किसी भी तरीके से आपको किसी प्रोडक्ट का एक्सपोजर मिला है, दैट शुड बी योर नेक्स्ट प्रायोरिटी। आप उस प्रोडक्ट के बारे में देखिए, जानिए, पता लगाइए और करिए। दैट शुड बी योर प्रॉपर्टी, बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विद दैट। यदि ये दोनों स्थिति नहीं है, तो देन वी शुड गो इन फॉर लोकल अपॉर्चुनिटी। सोसाइटी, हाँ, ये सारी योजनाएं जो हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, society should always be on top priority. You should know the needs of the society. You should know their expectations from you. और ऐसा सारे काम करने चाहिए जो सोसाइटी के फायदे के लिए हो, फायदे के लिए भी हो। लोकल अपॉर्चुनिटी, अब इसका एक एग्जांपल तो अपने सामने शशांक तिवारी जी, 24 किचन, उन्होंने देखा जरूरत है। आजकल घर में लोगों के हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, होम डिलीवरी इज अ वेरी कंफर्टेबल थिंग। उन्होंने इसको मौका को ताड़ा, इन्होंने किया, वो भी हुआ। और अब कोरोना में तो दिस हैज बिकम अ बूम। क्या बढ़िया काम हो गया जी, सब भी जाना नहीं है, अपने आप आपके घर में पहुंचा सकते हैं। वेल डन मिस्टर शशांक तिवारी, यू हैव शोन योर इनोवेटिवनेस। यदि लोकल अपॉर्चुनिटी से आप बहुत स्कोप नहीं मिल पा रहा है, तो आजकल गवर्नमेंट एडेड प्रोजेक्ट्स, हेल्थ और एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल्स, ये गवर्नमेंट इतने अच्छे से चला नहीं पाती है। बेसिकली वी नो, एवरीवन नोस दैट हेल्थ एंड एजुकेशन में यदि आप जाना चाहेंगे तो गवर्नमेंट विल नेचुरली विल हेल्प यू वेरी मच।
गवर्नमेंट काफी उसमें डेट देगा, फंड्स प्रोवाइड कराएगा, दैट इज, एंड देयर आर मेनी सच थिंग्स कॉल्ड इन, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एड मिल सकती है, स्टेट का। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की बात करें तो ये तो किसानों की अपने आप को सरकार बोलती, किसानों की सरकार है, गांव की सरकार है, नरवा गरुआ बाड़ी गोठान। यदि आप एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, विलेज का कोई प्रोजेक्ट लेके करेंगे तो आई एम श्योर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल आल्सो सपोर्ट यू इन ऑल योर ambitions and your projects. So these are some things which I felt from my own personal experience कि इसमें भी आप काम करेंगे तो आप अपने एरिया में रहते हुए भी यू कैन शो स्टार्ट एंड शो ग्रोथ वेरी मच। और यदि इन पांचों चीजों में भी यदि आप कहीं फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, क्लूलेस हैं, तो पिछले 10 सालों से मेरे पास एज अ उद्योग सेक्रेटरी कई लोग आते हैं, भाई क्या फैक्ट्री डालें, क्या उद्योग डालें हैं, तो मैं उनको एक चीज कहता हूं, यदि आपके पास कोई डिफाइंड प्रोडक्ट नहीं है, आप ऐसे रैंडमली घूम रहे हैं, तो इंडिया की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, उसकी जनसंख्या 130 crores. If you see them as a consumer, you have got such a big consumer base with you. Come out with a consumer product and you will have 130 consumer. ये जो बाहर वाले लोग आ रहे हैं किस लिए आ रहे हैं? एक महीने में जितनी पेप्सी बिकती है लंदन में, इंग्लैंड में, उतना एक दिन में हिंदुस्तानी में खत्म हो जाती है। They are all coming because of our consumer base. Why don't you also tap it? Find some. हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट अर्बन में नहीं बिके, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में नहीं बिके, छोटे गांव में बिके, but you can try consumer products. वैसे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के बारे में तो आई एम श्योर कि मेरे बाद वाले वक्ता अपने एक्सपीरियंसेस देंगे, अपने अन्य वक्ता आपको बताएंगे, इसलिए मैं उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन ये है कि जब भी कोई काम करें 2 या 3 गाइडेंस मैं देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी दैट इट इज नॉट इलीगल, गैर कानूनी ना हो, रात को नींद नहीं आएगी। इट शुड नॉट बी इमोरल, अधर्मी नहीं हो, सोसाइटी का संग, बुजुर्गों का वो आपको आशीर्वाद शायद कम मिलेगा, मगर इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों को भी साइड में रख दीजिए। द प्रोजेक्ट जो आप डालने जा रहे हैं, यू शुड लाइक इट, you should love it, and you should understand it well. Hello, are you listening? Hello. Yes, sir, you are audible. Please carry on. This is, I told you that you should like it, you should love it, and I'll take only 2 more minutes. Understand it sufficiently well. This is not an arranged marriage कि चलो शादी हो जाएगी और उसके बाद में we'll have love it. प्यार तो अपने आप ही हो जाएगा. You should first understand it, love it, and then get married to that project. We were, मेरे ख्याल से मेरा समय भी हो गया है और challenges भी है इस टॉपिक में. The challenges that are universal. I think the speakers next will be saying, I can think of 3 challenges. One is money. Money, वो government वैसे तो दे रही है, लेकिन still you should start with a scale which is economically viable and economically feasible. Second, कई बार देखा जाता है कि 3-4 लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, तो हर एक का क्योंकि टेस्ट थोड़ा अलग होता है, तो वो ये करना चाहता है कि एक मल्टीटास्किंग हो जाता है. I have seen some 7 or 8 projects failing because of this. वो बोलता है ऐसे कर, वो ये करना चाहिए, and because of that multitasking, it goes out of wire. And then third is scaling again, कि आप उस स्केल से स्टार्ट करिए जहां पे आप उसको सफाइस कर सकें और फिर धीरे-धीरे ग्रो करें. These are the points which I wanted to say. समाज हमेशा इसमें आपको सहयोग दे रहा है. You are a part of the society, so you have to bear with the you have to think about the society in whatever you do. मैं, on the part of myself, I thank the organizing committee for inviting me as a guest. और मैं आश्वासन देता हूं, जैसे बसंत शर्मा जी ने डिमांड करी कि छत्तीसगढ़ लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष केडिया जी और हम हमेशा तत्पर रहते हैं कि कोई भी नया उद्यमी यदि अपने डाउट्स लेकर के कुछ चीज क्लियरिफाई कराना चाहता है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहता है, तो वी आर ऑलवेज रेडी टू गिव हिम फुल सपोर्ट. हमारा सहयोग हमेशा उनके साथ रहेगा. थैंक यू वंस अगेन with my आश्वासन and thank you
for calling. Namaste. Thank you so much, sir. Once again, thank you so much for your thought-provoking and such a wonderful word. We are very lucky to have you in this event. Once again, thank you so much for your kind words. Thank you. Now, I would like to invite Dr. Neha Behar, Madam, from the Department of Biotechnology and Research and Development Cell, NAC Coordinator of DLSPG College, Bilaspur, Chhattisgarh, India, for theme address about this wonderful e-conference. Over to you, Neha, Madam. Thank you so much, Samiksha Madam. Good afternoon, everyone, and a warm namaste from India. I, Dr. Neha Behar, from Department of Biotechnology and Institutional NAC Coordinator, on the behalf of Livelihood Wing of DLSPG College, I would like to give theme address for this e-conference, Innovative Entrepreneurship for Society, Challenges and Opportunity. The DLS Livelihood Wing of DLSPG College is run by Path Shikshan Samiti and provides vocational learning program approved by the Mukhyamantri Kaushal Vikas Yojana, that is the Chief Minister's Skill Development Program. The courses which were offered were as follows: laboratory assistant, laboratory technician, general duty attendant, tally courses, and mushroom cultivation. It is also recognized training provider of Telecom Sector Skill Council for electronic system design and manufacturing. The Prime Minister's Skill Development course were also offered by DLS Livelihood College. Many students have been trained and even employed to the respective fields. Now we are mainly focusing on retail and medical attendants. In this pandemic, when the corona situation, there could be recession and low economy, there can be a loss of regular jobs and unemployment. Many youth can be either forced or by choice will have to move to entrepreneurship. So we need to capitalize this international e-conference with first-hand experience of the successful entrepreneurs in their respective fields, which are our speakers for today's event of this e-conference. I welcome all the speakers to this e-conference and wish it to a grand success. Thank you so much. Over to Samiksha Madam. Thank you so much, Madam, for your such inspiring words. Moving ahead, we have come to the end of our inaugural session. Now we are going to start our technical session for today. Our first resource person is Mr. Christian Hoyos, co-founder NetMinds Belfast, UK. He is an industrial engineer by profession with 12 years of experience in human-centered design and IT projects management. He has expertise with open innovation frameworks developed in multinational and SME companies in Latin America and UK. So once again, I welcome you, sir. I would like to invite respected Christian, sir. Over to you, sir. Thank you so much for the invitation, for that introduction. I'm very glad, I'm very thankful for being here and to share some of the experience that I have had as an entrepreneur. Right? I'm wishing that it will help the people on the call. Thank you so much. So first of all, so the idea that I want to talk today is more from my experience on how I decided to become an entrepreneur, because I think there are some theories and some concepts that you are not taught or people don't tell you about the entrepreneurial journey. We have been through two pre-accelerators, and in all of them, they always teach you about the technical, the economical, and the operative tools that you need. But they don't tell you that much, or they don't teach you that much about the personal journey that you need to go through when you decide to become an entrepreneur. And the other part is, after seeing that all these things that you need to understand to become an entrepreneur, is how you solve them. And the most amazing thing that I have seen about the community of entrepreneurs
is how everyone wants to help you. Everyone that has been through the entrepreneurial journey, they really want to help you. So the two elements that I want to leave today after this short session is, one, what are the challenges as a human being of deciding to be an entrepreneur? And second, on how community, how society can help you overcome those challenges. And how I want to start is, so a little bit of background for me, because I mean, my journey is gonna be completely different than everyone else. And I think it's amazing that when you are finishing the university, when you're finishing your studies, to hear and understand what an entrepreneur is. Because I didn't have that, for example. Once I left university, I immediately went through a corporate job. And I have actually my previous experience before becoming an entrepreneur, I was 11 years in open innovation. I was the managing director of an innovation department in the largest bank in Colombia. So when you are on that journey, you really don't understand what it really means to be an entrepreneur. And I think during that time, and this is not something that is not for everyone, and I think that is very important to realize and to understand at this point. And is that what I'm saying here, I'm gonna say from my passion, because I love being an entrepreneur, and I know that many people will say the challenges of the uncertainty of becoming an entrepreneur, the problems of being an entrepreneur. So I'm talking from my passion, but from each one of you, it's very important to decide which path to take. So the first thing was, once I was on this journey, after 11 years being like an employee, I understood that every year or every year and a half, I was like trying to get a new position in the corporation. I was never comfortable being on that position. And it was because I have always been very curious. I'm very uneasy. Like I really want to learn something every day. So for me, it was a challenge because I wanted to do something completely different every year. So I went through these different positions. Until one day I realized, okay, I need to change everything. That's when I decided to leave Colombia, come to the UK, and I did my master here. And while I was doing my master, I understood that my path was becoming an entrepreneur. Why? I mean, one of the most amazing things of being an entrepreneur is that I meet new people every day, and I learn new things every day. And every week is completely different than the previous one. And I think that's something that really needs to, you really need to understand from the entrepreneurial journey. That usually when you're on a job, in a company or in a corporation, you have a process to follow, and you have like a framework that you use every day or every week to go on with. But when you're starting a company, when you're starting your own passion, that framework and that process is going to change every week. So you don't only have to operate and work on what you need to do, but additionally, you need to create and design the framework that you're going to use to work every week. So now, saying that, I think one of the most important lessons is about the emotional intelligence that you need to withstand all these uncertainties and all these problems. Because here's the thing, you're gonna need to experiment a lot. And I love experimenting. You're gonna have, so for example, and this may not be easy for everyone. So if you have an idea, you have a concept that you want to test. So the most important thing there, and this is something that I think everyone teach you when you're an entrepreneur, is that the idea that you have needs to be addressing a real problem for human beings. But the thing is, when you're starting a company, an innovative company, that solution that you are addressing needs to be the most
needs to be something that hasn't been done before. So to do that, your idea needs not to make sense. Now, what does it mean? It means that when you explain your idea for everyone, people will, at the beginning, people will not understand that idea. And that's good. Why? Because if people understand your idea, if people understand the process that you're going through or that you did to reach to your solution, the most common thing is that someone else has already done it. But if you explain an idea, if you explain a concept that people don't understand, it's because it's something completely new. Now, how do you solve the problem, or how do you solve the challenge of realizing if that idea works? You need to test it. And you need to test it fast. You need to test it in the most cheap possible way. Now, to test that idea, what you need to do is go to the market. So for example, for us in NetMinds, we did that at the beginning. So we had a situation, and this is going to happen in your entrepreneurial journey. So we were having an idea, a concept of uniting businesses and universities, but COVID-19 arrived, and the priorities of all our potential clients changed. No one wanted to engage with us anymore because of COVID-19. So we needed to change our idea. And these are things that you cannot foresee, right? Because I mean, how we were gonna foresee that COVID-19 was gonna arrive this year? It was impossible. So, for example, we had an idea. Okay, what if during COVID-19, the founders of the companies could help each other? What if a person that has gone through a process of going to digital marketing? What if someone who has already gone through building a startup in the construction business could help someone else that is in the same journey? It's just starting the same journey. So what we did is we launched in a matter of 1 week, we developed like a small platform where people could register to offer help or receive help. And that's how you test. You just do the most simple process, and you start testing that the idea and the concept that you have is going to work. And then when you do it, so we did this for 2 months, you go back and see what worked. So what we saw, for example, there is that we got 100 people that signed up for our platform. And then we saw that 60% of the connections were successful. 60% of the interactions were successful. So how do you start a company from there? You understand what made that 60% successful. So it's like you go backwards, because usually when you're trying to understand a problem and get to a solution, you first go to the theory and the experience of the previous experiences, and you go through a process to understand what is the solution. In this case, you need to guess. You have to take a wild guess at the beginning, do a test in the real world, and then from the results that you get from that experiment, you go backwards to understand the why. But here is the situation. How do you get to those wild guesses? How do you learn how to experiment? How do you learn how to navigate these uncertain environments? So there is a concept, and I can send you some links later on the Zoom chat to read through this concept about entrepreneurial recycling. So imagine it's just the same as recycling for the environment, right? So when you have a city that does correctly all the recycling from the garbage and the trash that they have, what happens is that it becomes a self-sustainable city. It's the same with entrepreneurial communities. What happens is that whenever an entrepreneur reaches to success, so success for an entrepreneur is I managed after 5 years of developing my company, I sold my company for X millions of pounds or euros. Or I already have my company and I have 1 million revenue monthly. Once you arrive to that point, what you see is that they start recycling all their learning.
And I think that's one of the most amazing things that I have seen or that I have learned from the experience is that people that has been successful, they are very eager to help the ones who are starting. So what they do is that the money that they start receiving, the money that they start gaining there, they start to reinvest it in the companies that are just starting. So if you see there is like the value that is being generated is being recycled into the community. And the same happens with knowledge. The best thing that you can do is go to other entrepreneurs who have been through that same path and learn from them. And I think those are the tools that have helped us the most. That we have seen how other entrepreneurs that have done something similar in a similar market, that have done or have had some similar challenges, how did they do it? And it's just not seeing them. It's that you reach out to them and they're willing to give you time and listen to you, to your problems, and then tell you from their experience how you could solve them. That this concept of people helping each other, I think also there's also another point that comes from there, is that collaboration comes from the most unexpected places. And I think in this part, and this is very important for when you're starting a journey, is that your idea and your concept is gonna change a lot. And I mean a lot. I think since we started NetMinds, we have pivoted the idea at least 5 or 6 times. It has changed a lot. But the purpose, that's the most important thing. The purpose of why we are doing this has been the same from the beginning. So the purpose from the beginning for us was, how can we connect people to collaborate to generate more innovation in the world? The purpose has been the same. What does that do, right? That does 2 things. One is that when you approach someone to explain what you're doing, you're gonna tell that person with passion. You're gonna tell them from what you really want and what you really desire, what it is gonna be to be an entrepreneur and what it means, the concept that you're saying. And the other thing is that you're gonna have a very clear vision every time that you make a decision. Because if you don't have that purpose very clear, it's going to be more difficult for you to start making decisions as you go along. So, for example, in that case, just a little example from my experience. So I told you that before, that I was in Colombia. I was in my journey as a corporate employee, and I made the decision at some point. After 11 years having a job, I decided to leave everything and start from zero, start from scratch in somewhere else for a new path. Now, how do you make that decision? You make that decision by being very clear about the purpose. So when at that moment, I understood. I wanted to create something by myself. I didn't want to continue to work in a purpose or in a journey from someone else. I wanted to build something on my own. So once I had that very clear, I realized how crazy my decision was when I started to explain to everyone, or to tell everyone what I was going to do. So even my family, my friends, everyone were like, "You're crazy. Why are you doing that?" And I think that's going to be very common during the entrepreneurial journey. Everyone is going to tell you that that's not going to work. That's strange, because obviously you're doing everything to change the way things are. So if you do the same things that everyone else is doing, you're just gonna finish with the same solutions that everyone has. But once you understand that you need to take a different path, that you need to come out with ideas that don't make sense, that make sense to you, but don't make sense for everyone else, at that moment is you're gonna have the best, you're gonna be in the best position to develop your business or to start your business. And then, like, to finish up and to wrap up, there is this during this week. So I had I was in a podcast for the first time this week,
And there is something very interesting that happened after that podcast, because some friends of mine started to reach out to talk to me, to congratulate me about everything. But there was something that really clicked and changed how I see things. And it's that I have a friend in Spain that has told me every time that for the last year that he doesn't understand why I want to be an entrepreneur. He said, I don't understand it. Like, you don't have a stability, you don't know what is gonna happen the next month. I don't understand it. For him, the most important thing about his job is that he knows that he's gonna receive his money next month and that he knows what he's gonna do next week. He's completely stable. Now, after listening to me talking about the idea, he told me, now I understand it. When you talk about Netmines, when you talk about what you're doing, you don't feel that you're working. You don't feel that it's a job. You really feel that's your life, that you really enjoy it. So I think a very important point, and I think the last one that I would like everyone to go with this and really get this insight, is that the most important thing is that you enjoy and that you really believe in the purpose of the thing you're building. If you believe in that, if you really believe that the outcome of the work that you're doing is going to change the world, or that you're going to enjoy that result, you can start doing it. And this is very important because it's going to be very hard and it's going to be a longer journey than you believe. And I think people don't stretch enough this concept, right? When you start and go through an accelerator, or when you go to a mentor, they tell you, okay, you need to do this, this, and that. When they tell you that, you think, oh, that's 3 or 6 months. But usually that journey may take 3 to 5 years, and you're just starting, and you just have been 6 months with the idea. So you really need to understand that you're gonna work a long time on that concept, maybe even without receiving revenue. So it's very important that you really believe in the idea, because if you don't believe in the idea, you're gonna have a lot of times where you're gonna want to quit, and when you're gonna want to go back to something else. So if you really want to pursue this, I think the most important thing is to really have the purpose really clear. And second, as I was telling you, take advantage of the entrepreneurial community. Take advantage of it, because I think it's one of the ecosystems in the world where the actors of the ecosystem are more eager to help others without necessarily expecting something back. Because this is something really nice. This is a phrase that have come across many of the people that has gone through Netline, and is that they say, I want to help entrepreneurs and I don't want anything back because I'm just grateful for what I already got. So I want to give back. So I think those two concepts, they have a clear purpose and take advantage of the entrepreneurial community, are the two ones that I think are one of the best insights that I've gotten from the entrepreneurial journey. Thank you so much. Thank you so much, sir, for such a great words for entrepreneurship. And thank you so much. Your presence is very precious for us. Thank you so much. Now, I would like to invite Ms. Laura Bernal Vergara, co-founder Netminds Belfast, UK. She has over 7 years of experience in journalism and marketing, working with brands in Latin America and the UK. She learned about brand strategies and design principles, skill boosted during her time working with Netmind setup. So I would like to welcome you, ma'am. Over to you. Hi, everyone. Thank you very much for having me over. And I'm very happy to be here with Christian. You know, like I'm seeing the chat and I'm seeing all the all the comments of you. And I'm very happy as well to see that we can encourage you to do stuff.
So my story, it's going to be a little bit different to Christian's story, even though we work in the same company and we have decided to create Nightmans together. We have different backgrounds, and I'm not talking about cultural backgrounds because we are both from Colombia. And I think that's also very interesting in the sense of how to be an entrepreneur in an international setting, because we are working in the UK, but we come from a South American country. So I'm going to start telling a little bit about my story and how did I end up in the UK and how we decided to start this with Christian. As it was telling my presentation, I studied communications, something completely different to Christian. He's in engineering. So from there you can start, like, our mindset is just different. And at first I was a radio host. I used to work in radio for 5 years. And one of the things that I really enjoyed about my job there was meeting people and being in touch with the innovative things people were doing around the world. Because I had a radio program that was on different things and research that was going. So I was looking all the time for people to talk to me and tell me how they were doing crazy things. So from there, I started saying, like, you know what? I want to create something. I want to create something for the world. After that, I decided to go to advertising, and the idea of doing something different and learning more started to be more present. So that's how I found a master's in the UK, but I didn't have money. So I was like, well, what do I do? You know, what is it that I can do now? So I started looking for opportunities, knocking doors, a lot of doors. Finally, I got support from the Colombian government, and I got support from Newcastle University, which is the university I went to study. I went there and I started finding different type of jobs, freelancing, working inside of the university, trying to look for jobs inside of the university. And while doing that, that's how I met Christian, because we studied the same masters in innovation and creativity. And the idea of innovation being a group exercise started to be in our heads a lot, because one of the questions that we started having is, how do people get together to share ideas and to innovate? Because usually as human beings, we have our own purpose, you know, and your own way of thinking, but how do you get together with someone else to share those things and create something new? So we started seeing that one of the ways to share ideas was putting together academia and businesses. But if I tell you putting together academia and businesses, it sounds easy in language, but it's not easy. A lot of people have tried to do it. And, you know, everyone has started telling us, like, how are you guys going to put businesses and academia together? Because we were like, yes, but there's a lot of research there. So if we put people together to talk about it and to share knowledge, it will be amazing. The world will be a better place. And as Christian was saying, everyone was like, no, like, who are you guys? Like, really? Like, you just came here to the UK. Like, what is this? But we just didn't care. And I think that was the first time that I felt very naive, you know, like I remember I called my mom and I was like, Mom, I think I want to put together universities and businesses to share knowledge and to create innovation. She was like, I don't get it. Like, what are you doing? So from there, we just started kind of like thinking about what is it that we could generate to make those things happen. We want to see people together, sharing knowledge and helping each other, basically. So I remember again, like I was calling my mom during my period, like, Mom, I really want to do something. I had a notebook of ideas. So I was all the time writing. And I really encourage you to write your ideas. Like, no idea is stupid. And even if you have an idea that sounds very crazy in your mind, it's fine. Just write it down. Because as Christian was saying, sometimes the ideas that seems to not have logic are the best ideas because you're doing something different. And if you're thinking of that idea because of something that can make the world a better place, then it's worth it. So write it down.
So I can show you, like, I have a notebook full of ideas. And even during my master's, I was in class and suddenly there was an idea coming and I was like, idea. So write everything. And then I remember that after my master's was evolving and I was writing my dissertation, I was at the same time kind of like, well, I have to work if I want to stay here. It was just a lot of things at the same time. And I started feeling very naive and feeling that I wasn't going to make it to stay in the UK, because for internationals, for us, and more for Colombians, I mean, unfortunately, we have a bad reputation sometimes. So it was very hard. And I remember I was like, no, I'm not going to make it. I'm going to go back to Colombia. And the reason here is important that to say that the reason why I wanted to stay in the UK is because I saw that I could generate a greater impact. And my purpose is to generate an impact for the world, not necessarily for specific people. So I was like, if I generate the impact in the UK, I can generate the impact in India, in Colombia, everywhere. I just want to be strategic on where I can generate the most impact. So here is another concept along with naivety that I'll explain a little bit more, that it's being strategic. If you have a purpose, if you have an idea, if you have something that you want to achieve, take the world as your resource. Don't just think about your school or the people that you have around you, but think about the world, because there are opportunities around the world that you can reach out at. And that was our situation. I was like, yeah, I want to stay in the UK. I really want to stay in the UK, but I have 25 years old. I don't have a lot of work experience. I mean, I have some, but it's not something, you know, I don't have a network, but I have a massive idea. What do I do with that? Look for opportunities, reach out at people. We started talking to people, telling them like, hey, we have this idea. We can use artificial intelligence to bring people together. Because I think it has happened to you that you have some Facebook groups or some WhatsApp groups, and then suddenly you have 200 messages and it's like, no, I'm not going to respond to that. But those groups are being created to bring people together. So we were like, no, there has to be a more effective way to bring people together, to share knowledge. But where is it? Where can we have it? If it is not businesses and academia, where is it? And that's another thing that Christian was saying that I want to kind of like explain a little bit more from my view, and is how from a very, very big idea, you start finding different paths. And that's the experimentation and the changing of the idea that you go through, because you start seeing like, yeah, maybe it's this person, maybe it's not this person. And that's why it's also very important to have the purpose very, very clear. For us, it was how we can bring people together for collaboration, to help each other. And we started exploring different paths. So we started with academics and businesses. Then we said, okay, it could be business and business. And after a lot of experimentation, we are now into the point in which we are connecting the entrepreneurial ecosystem, founder and founder, but also with mentors. And we're encouraging mentors as well to be part of the equation to help each other. And just think that you're not naive. You know, if you have an idea, you can definitely reach it out. We have a visa now, we're in the UK, we have NetMinds, we have gone funding, because that was another thing. We finished our masters and we didn't have any money, you know, and we were like, well, what do we do? Again, you are not naive. If you really believe in an idea, if you really believe in a concept and you think that you can create an impact in the world, you're gonna find some support, because you're being courageous to do something that someone else is not doing, and you're caring about something that probably nobody else care, because they are scared. Not necessarily but because they don't care, but because they are scared of failing or not doing the right thing, or maybe not feeling secure about what they're doing. I think one of the things that Kristen said about it's a very personal journey, and nobody tells you that you're gonna be face to face to your feelings, and you're gonna be face to face with yourself telling you you're not good enough.
because it happens, you know, when you're in a university or where you're working in a business, you have someone else telling you you did a great job, or no, you didn't do a good job. You have always that. But when you're in the entrepreneur journey, you don't have that. You just see results, but sometimes results take time, and you don't know that it's a matter of taking time, and you of course go to yourself. So that's another thing that I wanted to say: surround yourself with people. It has been amazing for me to work with Christian, because it's about how we keep each other motivated. Because it's purpose, yes, but it's also motivation, because the motivation is what is going to keep you there in the moments of doubt. Is going to keep you in front, telling yourself, no, it's fine, this matters in the world, and I'm not naive, I can make it happen. There are so many opportunities. Like, remember, the world is your resource. Sounds crazy, but it is. We started in Newcastle, and then we got opportunities there. And then suddenly we were like, oh my God, what are we going to do? We got opportunities in Belfast. Now we're settled in Belfast, but we are now looking for how to expand to Spain, to Portugal. Now we're here talking to you. So it's just about how the world, as someone was saying before, becomes a smaller place, and you can have it in your hand, and you can utilize that, and you can get advice and help from people, and literally just be open-minded to receive messages from others and to see how you can better help others. There is one thing also about being strategic, as I was saying before, and is how you organize the path or the roadmap or whatever you want to achieve. So being an entrepreneur right now for society has the challenge of money. And what it means is that when you're thinking about creating an impact in society, you're more thinking about making the impact in society rather than how are you going to generate revenue or how are you going to get money. And at first, that was something we really struggled with, because we had this ambition of like, okay, let's connect people. And everyone just kept telling us like, yeah, but how are you going to make money of it? And we were like, well, we'll find it out. We just want to make this happen for the world. And that's something that you have to always keep in mind. It's like this balance between, yes, I want to generate this for the world, but also how this is going to make me money. There was one thing that I personally was struggling a lot when I started NetMinds, and I started encouraging people to volunteer and help entrepreneurs, because that was something we did in lockdown. We started telling people, like, if you're at home, if you have knowledge, volunteer some of your time and help the ones who are generating new things for the world, and they don't have all the skills that they will need. Because as human beings, we have to accept that we have some knowledge, but there are some other that we don't have. And that's how we get opportunities and we get support from the people that surround us. And I remember a lot of people telling me like, yeah, but like, how are you going to make a business out of it? Like, it's volunteers. And I was like, yes, but we are generating value of finding the volunteers and connecting them with the ones who need the help. If we were in the middle, probably they weren't helping each other. And probably if we weren't in the middle, the volunteers who could help somebody wouldn't be wanting to volunteer because they don't know where to help. And yes, but then somebody else was like, yeah, but that's a social enterprise. Why do you want to generate a profit out of it? And we were like, yeah, we want to generate a profit because if we don't generate a profit, we can't keep doing it. And this is important. And if we can't keep doing it, then we cannot have money to invest in something else and create something better for the world, because we have to survive out of something. And that's how I want to encourage you to think about those tensions that you're going to have if you decide to be an entrepreneur and decide to innovate, to generate something for society. That some people think that doing something great for society, it's charity. It is not charity. You can definitely generate business that generates greater impact for the world,
and generates profit. Because there's so many people that think that there is like a clash there. There is not. And tech for good and all the things that generate a greater impact in the world are the things that are going to generate more profit, because at the end of the day is making lives of people better. And that's ultimately what we want. We want to have better solutions for the world and for ourselves, and to become like worldwide citizens. That's something that I have started to see a lot. I am Colombian, but I want to generate something for Colombians, for people from the UK, from everywhere. And when I find people telling me, I just want to help people from my region, I'm like, I can respect it. That's perfect. But why? You know, at the end of the day, we're all human beings and we can all help each other. Actually, if we have different cultures, it's even better, because we have views of the world different, and that can only generate greater value. So there is another thing, and it's about how innovation nowadays, I'm not going to say it's easy because it is not, but we are in a very well developed century in which there are many tools that we can use. So we are building a platform in which we are using artificial intelligence algorithms, and we have a very tech side of things, but I can't code and Christian can't code. And at the beginning, that was something that we were like, well, how do we want to be in the tech sector if we don't know how to code? That's how we found non-code tools. And Christian became an expert of non-code tools. And actually, if any of you want to learn about it, send him a message. Chris, I'm sorry, I'm just selling your time, but it's okay. Because there are so many opportunities to innovate, really, and to automate everything. Everything that we have built have been non-code, and finding opportunities from the government as well. Innovation vouchers, here, there, people wanting to help, angel investors. That's something that it's very important to start learning about the ecosystem and who is in there, as Christian was saying, helping from each other. And yeah, I think just to wrap up and to give like a conclusion about the topic that we're talking about, is there is a greater need for innovations to impact society. And there are a lot of opportunities in the sense of the world is your resource. There is always people wanting to help. There are always opportunities out there, but you have to be strategic of how you reach at those things. How do you reach at people, and what is it that you really want for the world and for yourself? Because you cannot generate a greater impact in the world if you're not happy with yourself and with what you're doing. That's in the side of opportunities. And on the side of challenges is always thinking about the friction of the haters. You know, there's always going to be people telling you, don't do it, or you're crazy, or it doesn't make sense, or why should I be listening to you? And that the greatest challenge is going to be yourself. And how do you overcome all the thoughts that you're having and all the frustration? Because it's a long journey. It's a long journey, but it's worth it. So never feel alone. Always reach out for help. If you want to start a business, register at netminds.uk. There is where we are matching with mentors. So if you want to, you know, like, don't feel alone because you're not alone. Never feel naive because you're not naive. You're just having crazy ideas that you can definitely make them happen. You just have to plan and be strategic. Think collaboratively. So it means think about the ones who can help you rather about the ones you are competing against. That's very important. And also feel a citizen of the world, because at the end of the day, everything you do will impact the world at the end of the day. So yeah, I know we have a Q&A session. So if you have some questions, just keep them in mind and we'll be happy to respond everything.
Thank you. Dear participants, if you have any question regarding this session, you can put your question in chat box. We will convey to the speakers. Or you can directly interact with our speakers. So if there are no questions, then I would like to thank you, ma'am, for this wonderful session. And thank you so much for sharing your wonderful journey with us. Once again, thank you so much. Now, I would like to invite Mr. Nitin Ranjan sir, founder AAI Events and Business Consulting, Patna, Bihar. He has running event and business consulting from since 8 years. He has been part of various major pan-India activities like Global Warming Awareness Program, Leadership Development Program. He has executed many CSR activities like Kisan Seva Kendra Assessment Survey for IOCL, CNG Needs Assessment Survey for IGL and MGL, APRD Air Pollution Related Diagnostic Center Allotment Survey for GAIL India Limited. Kindly welcome respected Nitin Ranjan sir. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Hello, Sir, all you are of not you. Audible है? Yes, sir. You are audible. So अभी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस शेयरिंग देखा इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल की काफ़ी अच्छे कोचेस स्टार्टिंग में आपको उन्होंने बताया. मैं थोड़ा डिफरेंटली इस चीज़ को देखना चाहूँगा. एंटरप्रेन्योरशिप हमारे इंडिया में क्या है, किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर से चैलेंजेस आगे बढ़ाते हुए हम लोग ले जाते हैं और उस चैलेंजेस को पॉलिसी मेकिंग से लेकर के सोसाइटी के इनिशियल डेज से ही वो चैलेंज के बहुत सारे बैरिकेड को हमें पार करना होता है. नंबर वन, मैं खुद के बारे में बताऊं, मैं बेसिकली पहला जॉब स्टार्ट किया था दिल्ली में 2000 में और फर्स्ट कंपनी मैंने फॉर्म किया था 2003 में. 2 साल के जॉब के दौरान ही एक था कि नहीं बिजनेस में जाना है, कुछ अपना करना है. उस दौरान सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा हाइप थी और सेम 2003 में हम लोगों ने वो थोड़ा सा कंट्राडिक्ट हुआ कि हम लोगों ने स्टार्ट किया और उधर स्लो डाउन भी आ गया था. उसके बावजूद भी हम लोगों ने लगभग 2005-06 तक चलाया था कंपनी. बट इनिशियल फेजेस जो होते हैं लर्निंग के, बहुत यंग, दोस टाइम वी वर हार्डली 3 or 4 पार्टनर्स थे और चारों पार्टनर लगभग 23, 22, 21 के आसपास थे सारे लोग. IIT से पास आउट हुए थे. पास आउट होकर हम उन्होंने दिया था, फ्रेंड्स लोगों ने साथ में स्टार्ट किया था. वो जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो पीरियड होता है आप लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप सोचने का, वो आना खास करके हमारे सोसाइटी से स्टार्ट होता है. सोसाइटी में उसके लिए क्या फ्रेमवर्क बना हुआ है अभी आज के डेट में, वो फैमिली से हो या सोसाइटी में, क्या फ्रेमवर्क है, माइंडसेट क्या है हमारा बीइंग अ एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए. लोगों का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट हो, सोसाइटी का सपोर्ट हो. बट यहाँ पे पहले फैमिली को चेक करते हुए इनको आज से 20 साल पहले हालात काफ़ी डिफरेंट थे. आज के डेट में एंटरप्रेन्योरशिप लोग सोच पा रहे हैं, सोचना शुरू किए हैं मेरे ख्याल से. उसके पहले एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैपिटल जब तक नहीं है आप सोच नहीं सकते हो. सेकंड था फ्रेमवर्क उतना नहीं था, ना गवर्नमेंट संसाधन उतने सपोर्ट्स थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उस ढंग का था. बट आज के डेट में आईटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुका है, आपके पास जो भी हैं एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं. बट उसके लिए बेसिकली मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पहले तो एक विजन देखो. विजन का कहने का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप स्टडी में हैं, अभी
2 साल 3 साल 4 साल 5 साल स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद 5 साल बाद मार्केट होंगे क्या, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट, उस टाइम के लेवल पे आप जाके सोचोगे। कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, प्रोडक्ट मेकिंग है, कोई भी एंटरप्रेन्योर्स की जब जो अभी सारे लोगों ने डिस्कस किया, उन्होंने जब सोचा, उस टाइम का सोच वो नहीं था, इट वाज फॉर बियॉन्ड, उस करेंट प्रेजेंट टाइम का सोच नहीं था। वो 5 साल 10 साल 15 साल के बाद वो डेवलपमेंट फेज में जब आता है, तब जाके लोग बिलीव करते हैं ऐसा भी हो सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए विजन रखना, वो आपस में आप कहाँ से इस चीज को फैच करें, किस टाइप के लोगों को फॉलो करके, किस टाइप के लोगों को सुन के, देख के, उनके बारे में जान के हम किस तरह से अपने आप को इंस्पायर करें, एस्पायर करें। ये सबसे मेजर पॉइंट है, खास करके एज अ स्टूडेंट्स। एज अ स्टूडेंट आपको ये चीज देखना पड़ेगा, आप इंस्पायर कहाँ से होते हो, एस्पायर कहाँ से होते हो, और जब तक वो चीज विजन नहीं आएगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ जो कि हैं एग्जिस्टिंग, अभी भी हैं। अभी भी बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग किस टाइप से इनके फीचर्स होने चाहिए, किस टाइप के फ्रेमवर्क होने चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, या गवर्नमेंट भी काम कर रही हैं, सोसाइटी में लोग बढ़ रहे हैं, बट अभी भी कुछ हद तक वो लिमिटेड है। कुछ हद तक दे कैन बी फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, मतलब कैपिटलिस्ट फैमिली हूँ मैं, पैसे वाले फैमिली हूँ, या कुछ हायर एकेडमिक के हूँ, बट नेक्स्ट डोर गाइस, नेक्स्ट डोर स्टूडेंट्स, एक मिडियम क्लास फैमिली के लोग एंटरप्रेन्योरशिप को सोचना, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में उन्हें सबसे पहला ऑब्जेक्शन रहता है पैसे लगते हैं। मैं इस पे भी आऊँ, पैसे लगते हैं। सेकेंड, एकेडमिया जिनके पास होती है, प्रोफाइल जिनके पास होती है, उनके पास अच्छे लेवल पे जॉब करते हैं, वो 2 साल 3 साल 4 साल जॉब करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं। सेकेंड, जो कैपिटल में है, वो कहीं कैपिटल लगा के कुछ भी स्टार्ट किया, वो एक रेगुलर माध्यम से वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। बट एक कैच बताता हूँ यहाँ पे, आप केस स्टडी उठा के देखें, मल्टीपल केस स्टडी भरे पड़े हैं। आज के डेट में ओयो को ले लो आप, ओयो का जो हेड है, जिसने फाउंडर है, नितिश अग्रवाल, वो कहाँ से स्टार्ट किया था? वो सिम बेचा करता था, सिंपल। उसने कैसे सोचा एक सिम बेचने वाला इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना सकता है? सो थिंक, आज की जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो डिफरेंट सोच से बन रही है, डिफरेंट विजन से बन रही है। नितिश ने एक प्रॉब्लम को देखा, उस प्रॉब्लम को लिंक किया, उसके लिए विजन वो देखा, यार ऐसे ऐसे ये हो सकता है, फिर उसने ट्राई किया और सक्सीड हुआ। सभी नहीं होते हैं, बट हाँ, कोशिश करने वाले ही होते हैं। और इसमें मैं, जहाँ तक पैसे की बात है, कैपिटल के थ्रू ही एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, ऐसा नहीं है। आज आइडिया का जमाना है। आइडिया एक से, जैसे मैंने अभी ओयो का बताया आपको, एक आइडिया ने ओयो को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, एक सिम सेलर्स को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, एक छोटा सा आइडिया। देयर मल्टीपल कितने सारे आपके ऐप बने हुए हैं आज के डेट में, जो मिलियंस में कमा रहे हैं। वो सब एक आइडिया था सिंपल। एक 2 दोस्त 3 दोस्त बैठे, बातें की, वहां से प्रॉब्लम्स पे बातें हुई, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पे बातें हुई, ऐप बनी, ऐप बन के लॉन्च हुआ। उस पर जो मेहनत किया उन्होंने, एक से एक ऐप आज के डेट में मार्केट में है और अच्छा खासा उनका हो रहा है। सेकेंड, चैलेंज में हमारी सोसाइटी की क्या प्रैक्टिसेस हैं? चैलेंजेस में केवल ये, हम एज ए स्टूडेंट आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, बट एज ए फैमिली जो सपोर्ट होती है, एज ए सोसाइटी जो सपोर्ट होती है, वो अभी लैक है, नो डाउट, बहुत लैक है। लोग समझ नहीं पाते हैं उतनी ज़्यादा, क्योंकि एक्सपोजर गैप है अभी। एक्सपोजर गैप मतलब आप जो 10 साल 15 साल के बाद के सोच की बात को उन लोगों तो आप जब बात को रखोगे, तो वो अभी उस स्टेज पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी 10 से 20 साल आगे हो और 10 से 20 साल आगे की बात कर रहे हो। माइट भी उनकी वो एक्सपोजर नहीं है। आप मेट्रोज में रह रहे हो, आप छोटी सिटी में भी रह रहे हो, तो आप इंटरनेट के थ्रू
ग्लोबलाइजेशन इस कदर बढ़ गई है कि आप कहीं भी किसी भी फिंगर टिप्स पर अगर इंटरेस्ट है तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हो। सो ऑल टुगेदर जो हमारी सोसाइटी के चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपको मजबूत करना पड़ेगा अपने आइडियाज को, और उस आइडियाज में बेसिकली दो ऑब्जेक्शन मेरे तरफ से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। विदाउट कैपिटल भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, जोड़ी नहीं सारे बोनाफाइड आइडियाज हूँ, छोटे छोटे आइडियाज। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं मिलियंस की बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मिलियंस की बिजनेस की केस स्टडी में बता सकता हूँ किस टाइप के। ओयो को पढ़ लो आप, ओला आया था, ओला का पढ़ लो आप, मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनका पढ़ लो आप, कहाँ से शुरू हुए थे कहाँ पहुंच गए। अभी एक IIT का पास आउट बंदा है पटना में, उसने अभी स्टार्ट है, वो हार्डली 5-6 साल 7 साल से मैं जान रहा हूँ उसको। वो किसानों का कंसल्टिंग देके, किसानों का काम नहीं करके किसानों को कंसल्टिंग दे करके, छोटे छोटे किसानों को जिनके 2 बीघा हैं 10 बीघा हैं, उनको कंसल्टिंग देके, उनको टेक्निकल कंसल्टिंग, उनका गवर्नमेंट की तरफ से जो ये आते हैं स्कीम्स आते हैं, उनकी कंसल्टिंग, किस टाइप के उनके अनाज लगाने हैं, क्या कब लगाना है, मार्केटिंग कंसल्टेंसी, ये दे करके छोटा सा जगह से स्टार्ट किया था। एक बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है गया, वहाँ से स्टार्ट किया था। आज के डेट में लगभग पूरे बिहार में वो बंदा कर रहा है। ही इज स्प्रेडिंग डे बाय डे, ही इज स्प्रेडिंग, नो डाउट। माइट भी दूसरे स्टेट भी अभी कवर करना हो स्टार्ट किया हो, बट लास्ट ईयर तक उन्होंने नहीं किया था। तो एक छोटा सा आइडिया, दैट्स कंसल्टिंग थिंग्स, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं है। सेकंड मैं अपना शेयर करता हूँ। 2003 में हमने कंपनी स्टार्ट की, 4 फ्रेंड मिल करके। 2006 में स्लो डाउन हुआ, कुछ अच्छा खासा वो मेसअप हुआ उसमें काम का, हमने वो ड्रॉप करना पड़ा। फिर हम लोग जॉब में आ गए, सारे फ्रेंड्स जो IIT फ्रेंड थे, वो किसी ने सिटी बैंक ज्वाइन कर लिया, किसी कोई बॉक्सिंगटन चला गया, कोई कुछ सारे लोग स्कैटर्ड हो गए। इवन आई ज्वाइन समवेयर एज अ जॉब, और काफी अच्छे प्रोफाइल्स पे काम किया जॉब में। तो ये फेल्योर जो है, ये फेल्योर बहुत जरूरी होता है आपको आगे का रास्ता दिखाने के लिए। तो जस्ट ट्राई। एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक टेक्निकल आप किताब में भी पढ़ सकते हो, केस स्टडी आप किताब में भी पढ़ सकते हो, बट पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। वो बिजनेस जो 2005 में मेरा क्लोज हुआ, उसमें इन्वेस्टमेंट लगा था, नो डाउट, बट उसके बाद आज तक मैंने जो बिजनेस किया है, आज के डेट में भी कर रहा हूँ, उसके बाद भी 1-2 बिजनेस किया हूँ, अच्छा खासा किया हूँ, बट कभी भी एक पे इन्वेस्ट करके नहीं किया। जीरो से स्टार्ट किया, उसको बनाया हूँ, किसी तरह से सस्टेन किया है। कभी मेरी इश्यूज के कारण से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा हो, किसी और काम में व्यस्तता हुई तो वो स्किप होगा, तो वो हैंडलिंग नहीं हो पाई, बट वो बना है, एक स्टेज तक बना है। जस्ट एग्जाम्पल 2-3 चीज का दे रहा हूँ आपको, छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इट्स नॉट अ बिग, मैं कोई आपको बिग एंटरप्रेन्योर की कहानी नहीं बताऊंगा, छोटे से स्टार्ट होती है। बिग एंटरप्रेन्योर भी छोटे आइडिया से स्टार्ट होती है, और कहाँ कब वो क्लिक करते हैं, मैंने ऐसा ही देखा है, अपने सीनियर्स को भी देखा है, ऐसे भी सीनियर्स को देखा है जो एंटरप्रेन्योर्स का स्ट्रगल 50-55 में जाकर उन्होंने अचीव किया अपना, एक्चुअली अपने स्ट्रगल के बाद का जो उसको क्या वो रिजल्ट, उन्होंने 55 में जाकर अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया, और 55 के बाद आज पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं वो। देयर मेनी थिंग्स जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझने के बाद आपको खुद पे अप्लाई करना है, खुद को असेस करना है। उसका मैं एक चैलेंज बताऊंगा कि आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हो, तब आपको किस किस बात के लिए रेडी होना पड़ेगा, वो मेरा लास्ट है। सो इसकी मैं करता हूँ। तो इसमें पैसे लगा के बिजनेस नहीं होते हैं, आप बिजनेस, उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन रखना होगा। इंटरेस्ट आपको किस चीज में है, उस इंटरेस्ट को लेकर के आप कितना ऑब्जर्व करते हो चीजों को, कितना चीजों को आप रिसर्च करते हो। रिसर्च बुक
रिसर्च नहीं बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग नेट से हो सकता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग उस फील्ड के लोगों से मिलके हो सकता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग उसमें आप जॉब करके कर सकते हो। सो ऑल टुगेदर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वो सारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके फिर आप उसे ट्राई कर सकते हो। सेकेंड, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद एक सस्टेनेबिलिटी आती है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसमें आपको देखना है आप क्या कर पा रहे हो। आप जितना 100% दे रहे हो अपना, यू आर हैप्पी, बी हैप्पी। वो फेल भी कर रहा है तो बी हैप्पी, क्योंकि वो फेल होते होते भी आपको इतना कुछ दे के जाएगा कि आप नेक्स्ट जॉब जब उसको स्टार्ट लोगे, जो भी लोगे उससे ऊपर लोगे, क्योंकि आपने तो इन्वेस्टमेंट किया नहीं था। आपने इस पीरियड में जो आपने अपना एक्सपीरियंस लिया है, जिस तरह से बिजनेस नेटवर्क बना है आपका, बिजनेस नेटवर्क के बाद जो आउटपुट आए हैं, ठीक है, किस तरह से फेल हो रहे हैं, दैट्स द पार्ट एंड पार्सल फॉर एनी काइंड ऑफ सक्सेस। एंड जनरली घर में भी कुछ बनाना सीखते हैं, करना सीखते हैं, तो वो उस सिस्टम से निकल के ही वो फेल होना शुरू में, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, क्योंकि हमारी मोस्टली जो मिडियम क्लास फैमिली है, जैसे मैंने बताया 20 साल पहले तक एंटरप्रेन्योरशिप का कोई हमारे यहाँ प्रॉपर ना फ्रेमवर्क था, ना सोच था, सोच ही नहीं था। एक शॉप खोलने से लेकर के ज्यादा से ज्यादा कैपिटलिस्ट है तो वो फैक्ट्री खोल लेते थे, बट एंटरप्रेन्योरशिप जो आज की डेट में जिस ढंग से वाइट हुआ है और जिस तरह से एक्सेप्टेबल है, वो नहीं था। और उसके कारण से हम इस चीज का रीच अपनी सोसाइटी के उन लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या आज के डेट में रिक्वायरमेंट है और किस ढंग से ये वर्क करती है। तो उन्हें वो आपके फेल्योर को या सक्सेस को ही जस्टिफाई करेंगे, फेल्योर को कभी जस्टिफाई नहीं करेंगे। बट आपको खुद को जस्टिफाई करना है, आपके फेल्योर को भी, इन पॉजिटिव मैनर। मनी डज नॉट मैटर, फेल्योर डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स योर कमिटमेंट, योर पैशन फॉर व्हाट यू आर डूइंग, whatever, कि जहां पैशन हुआ वहीं आइडिया निकल पाएगा और उस आइडिया को आइडिया बना पाओगे। छोटे से, बहुत छोटे से स्कीम, कोई आइडिया को आप बड़ा बना सकते हो जब आपको उसमें इंटरेस्ट हो और साथ में आपकी कमिटमेंट हो। दैट मैटर। अगर कमिटमेंट है और आपका पैशन है, यू विल get another level with a few failure, with a few remarks। वो hurdles आएंगे, वो बैरिकेड आएंगे, वो आप पार करोगे। अब मैं इसमें लास्ट, हमें बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स की सोच को डेवलप करने के लिए क्या करना है? एंटरप्रेन्योर्स की सोच को डेवलप करना है, सोच को। उसके लिए आपको किस स्टडी पढ़ो आप, मल्टीपल आज के डेट में इंडिया से इतने सारे यंग चैप हैं, एंटरप्रेन्योर्स, नए फील्ड में बहुत सारे हैं। मेरे नॉलेज में आप बेंगलोर में चले जाओ, हार्डली 30 years, 25 years, 28 years, गुड़गांव आ जाओ, हार्डली 35 years, 30 years में एक स्टूडेंट एक कंपनी बना के बैठा हुआ है। जस्ट उनके बारे में जानो, उनसे मिलने की कोशिश करो, मिले नहीं तो नेट पे पढ़ो उनके बारे में, और साथ में वहां पे जो आपको पसंद है उस चीज को अपने आप पे अप्लाई करो। अप्लाई करने का मतलब कहीं भी, जनरल लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ, क्योंकि वो आपको मेकिंग करेगा। अगर एंटरप्रेन्योरशिप को आपको रियली में अडॉप्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप केवल पॉजिटिव नहीं है, बहुत सारी चीजें नेगेटिव भी हैं, बट नेगेटिव के साथ में सबसे बड़ा वाइब्स ये है कि हमारी अपकमिंग जनरेशन जो है, अपकमिंग टाइम जो है, वो एंटरप्रेन्योर्स ही हैं। 100% एंटरप्रेन्योर्स के हैं। अगर यहाँ पे आप पीछे रहते हो इस सोच को डेवलप करने में, यू विल लैक योर अपॉर्चुनिटी, वो आपको पीछे कर देगा। इस चीज को डेवलप करने में दूसरा चीज है आपकी विजन। आज से 20 साल के बाद किस टाइप के जॉब मार्केट में होंगे, क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्या चीज नहीं होगा, उसके बदले क्या चीज आ जाएगा।
वो चीज़ों पे आपको सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। पहले मोटे तौर पे समझो, फिर बारीकी से समझो, फिर ठीक है आज हम कहते हैं यूएसए बहुत आगे चला गया, इजराइल बहुत आगे चला गया, मल्टीपल कंट्री हैं, इतना आगे चला गया। जो कंट्री आगे गए हैं वहाँ भी वही हाल है। आज से 20 साल के बाद वहाँ की भी जो सिचुएशन है वो उसी मल्टीपल टाइम्स में डेवलप होंगी जिस तरह से हमारे इंडिया में होंगी। माइट बी इंडिया में 10 टाइम्स हो, वहाँ 5 टाइम्स हो, क्योंकि वहाँ पे कंसिस्टेंसी आ चुकी है। इंडिया 10 टाइम्स 15 टाइम्स, तो ये सोचो 10 टाइम्स और 15 टाइम्स की जो स्पीड होगी उसे आपको कैच करना है। सिर्फ एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, अभी अगर आप फेसबुक कर रहे हो, गूगल कर रहे हो, होपफुली व्हाट्सएप पे भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। वाइट जार एक बेसिकली ट्रेनिंग कोर्स है बच्चों की कोडिंग सिखाने के लिए। व्हाट दे से आफ्टर 5 years और 10 years हमारे पास जॉब के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होगी कोडिंग की। उन्होंने विजुलाइज किया, मार्केट को विजुलाइज किया, मार्केट को असेस किया, देन दे इंट्रोड्यूस द कोर्स। वो छठे बच्चे 6 साल के बच्चों से स्टार्ट कर दिया कोडिंग सिखाना। नाउ यू थिंक यू आर पीजी, यू आर यूजी, जो भी बच्चे हो आप सोच लो, वो बच्चे जो निकल रहे हैं 6 साल के बच्चे जो कोडिंग करके 10th क्लास तक कोडिंग करके अपना प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, वो बच्चे से आप कैसे compete कर पाएंगे? ज्यादा दिन नहीं है, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो भी मार्केट में होंगे। बस उनकी विजन जो होगी वो आपसे अराउंड 100 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। 100 टाइम्स, नॉट 10 टाइम्स, क्योंकि जो एक्सप्लोर वो कर पाएंगे वो आप बहुत लेट करेंगे, और एक टाइम पे आने बाद एक्सप्लोर करना भी मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके पास चेकमेट की गुंजाइश नहीं होती है। सो ये चीजों को आपको ध्यान देना कि आप एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप को कितना रेडी करते हो। और अभी से ये नहीं कहूंगा मैं बीइंग ए स्टूडेंट जस्ट आप कोर्स पास कर लो उसके लिए बात कर लो, या एंटरप्रेन्योरशिप पे आप कोई वेबिनार या सेमिनार अटेंड करो, उससे काम मुझे नहीं होगा। ये आपको पर्सनल डेवलपमेंट में लाना पड़ेगा, डे टू डे में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। साथ में कुछ आप आईटी का हेल्प लो, ट्विटर है, ट्विटर पे एक से एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, हर टाइप के वहाँ पे केस स्टडी होते हैं, गूगल्स में केस स्टडी आप लो। इंटरेस्ट आपको जगाना होगा खुद में। हाँ, आपको जो करना है जिस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप में आपकी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। ये मेजर है। आप एंटरप्रेन्योरशिप को, अगर एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है आपकी, तो आपको ये डेवलप करना मस्ट है, एक्सप्लोर करना मस्ट है। केस स्टडी आप स्टडी कीजिए, फेल्योर्स नहीं डरिए, आपकी पैशन और कमिटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं सभी कुछ को साइड करूंगा, अगर पैशन कमिटमेंट नहीं है तो एंटरप्रेन्योरशिप उस कैंडिडेट की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चैलेंज है, काफ़ी चैलेंज को आपको पार करना होगा, काफ़ी कुछ पार करना पड़ता है। दे आर लकी वन जिन्हें वो चैलेंज नहीं मिलता है, दे जस्ट गेट एन आइडिया और दे क्लिक द थिंग्स लाइक एनीथिंग, लाइक अ रॉकेट। ठीक है, वो नहीं होता है। एज पर माई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता है। वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। जो मैं सोच पाया था वो उसका 50% भी नहीं है, 25% भी नहीं है जितना सोच पाया हूँ। और वो चीज़ कन्वर्ट करना सीख लें, वो चीज़ को कन्वर्ट करना सीखना है तो आपको कमिटेड और पैशनेट होना पड़ेगा। सेकंड, ये आपके चैलेंज की बात हुआ, सोसाइटी का मैंने बताया जो चैलेंज है, आपके चैलेंज की मैंने बताया कि आपको क्या करना है। इस स्टेप के बाद बात आती है गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के डेट में गवर्नमेंट पॉलिसीज या इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्लोबलाइजेशन, ये सारे मैटर करते हैं पॉजिटिव साइड, as per my observation, as per my experiences हैं, बट उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं अच्छी तरह से मिलती है, या अच्छी तरह से हम इंफॉर्मेशन लेते नहीं है, गैदर नहीं करते हैं। सो वी डोंट कनेक्ट विद दैट एंड वी से गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बहुत सारे पॉलिसीज आते रहते हैं एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे
लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, लोन के अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं। अभी एक छोटा सा करंट में बता रहा हूँ, शायद कितने बच्चे जानते हो, आई डोंट नो। आत्मनिर्भर भारत हार्डली अराउंड 15 डेज 20 डेज बैक नारा दिया गया। उसके लिए आत्मनिर्भर ऐप के लिए भी गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट को ही इन्फॉर्म किया कि आप बनाओ, उस पर शुरू होगा, वो बनेगा। उन्होंने बनाया। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी उससे कनेक्टेड होने का भी आ रहा है। मल्टीपल चीजें हम आती रहती हैं, बट आपको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ब्रांचेस निकालनी पड़ेंगी, कहाँ क्या क्या करना है। केस स्टडी कर रहे हैं, वहां से सीख करके फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखते रहना है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, आपके चैलेंजेस क्या क्या हैं, अगर फैमिली चैलेंज है, सोसाइटी चैलेंज है, तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। हैंडल करने में तो मुझे आप ज़्यादा समझा नहीं सकते हो, उन्हें करके दिखाना पड़ेगा आपको। जब तक आप करके दिखाओगे नहीं, तब तक आपको वो प्रेशर एक तरह से सस्टेन करना पड़ेगा। एंड दैट हैपेंस एवरीवेयर। हम लोगों ने ऐसा ही एक्सपीरियंस किया। जब भी स्टेट उठाया, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट करने हैं, बिजनेसमैन है, जिस स्टेट में आपके आइडियाज हैं, उस टाइम इनिशियल स्टेज में क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्राइस रजिस्टर हो रही है, ये हो रही है, ठीक है। वो ये छोटी छोटी चीजें ना एंटरप्रेन्योर्स के बहुत बड़े हेडल्स हैं। लेटर ऑन के स्टडी आप ओयो का भी पढ़ के सीख सकते हो, बड़े बड़े बुक्स हैं, उन्हें पढ़ के सीख सकते हो। बट ये हेडल्स उस टाइम में आपके साथ कोई नहीं होता है, ना बुक्स होता है, ना एक्सपेंसेस होते हैं, ना आपके पास उस ढंग की केस स्टडी का हेल्प होता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर। ये आपको करना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आप बने, करके दिखाएं, अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को करके दिखाएं। हम लोगों ने स्टार्ट में जो भी चीजें स्टार्ट की, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता। उसका 2 एग्जांपल देता हूँ। 2010 में ईआरपी स्टार्ट किया था, स्कूल ईआरपी। हमने पटना में गया था, और ईआरपी का मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ, ईआरपी का लगभग वहां पे 80 से 90% प्रिंसिपल तक को आइडिया नहीं था ईआरपी होता क्या है। फ्रैंकली ईआरपी को मुझे सॉफ्टवेयर बोलना पड़ता था, उन्हें बताना पड़ता था सर bunch of the softwares work all together with the connectivity, so it's called ERP, और उसका फुल फॉर्म बता के फिर उन्हें समझाना पड़ता था। और ये मैंने किया है, पटना के स्कूलों में जा के किया है। जब वो चीज़ आई थी, नहीं ऐसे थोड़े काम होता है, ऐसे काम नहीं होता है, ऐसे काम नहीं होता है। एंड गॉट अ चैलेंज। 3 महीने के अंदर मेरे पार्टनर्स ने और जो भी सीनियर्स थे, डायरेक्टर्स लोगों ने मुझे जंप किया, जस्ट क्लोज इट, ये बिकेगा नहीं, ये ऐसे नहीं हुआ। बोले सर मुझे गिव मी चांस, 2 स्कूल में मुझे लगाने दो, मैं देता हूँ। 2 स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एम्प्लॉय की सैलरी निकाली थी हमारी। व्हाट आई डिड, मैं बोला सर आप आई कार्ड बनाते हो ना, हाँ, तो मुझे डाटा चाहिए था। मैंने बोला डाटा, अब आई कार्ड का पैसा दे दो मुझे, मैं आई कार्ड बना के दे देता हूँ, उसी में आपको सॉफ्टवेयर लगा दूंगा। फर्स्ट इट वाज नवंबर। अब नवंबर में आप समझ सकते हो, मार्च तक में स्कूल स्टार्ट था। कोई भी ईआरपी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इंस्टॉल हो जाता है, और कोई भी ईआरपी स्कूल में इंस्टॉल करने में उस टाइम 2010 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम लगभग महीने भी लग जाते थे कुछ भी डाटा एंट्री और ये करने। बट ये चीजें नवंबर दिसंबर तक हमने 2 वो लगा दिए आई कार्ड के नाम पे। फिर दूसरे सेल्स वाले ने बोला कि ये कैसे होगा, बिना पैसे तो कोई लगा लेगा, वर्क नहीं करेगा। दैट हर्डल्स केम। उसको बोला पैसा देके कोई नहीं खरीदेगा। वो 2 सॉफ्टवेयर लगा, दैट वाज माय कॉन्फिडेंस। वो 2 सॉफ्टवेयर लगेंगे, लोग समझेंगे कैसे काम करता है, वो माउथ टू माउथ चीजें वर्कआउट हो जाएंगी। छोटा सा सिटी है, हर टीचर एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर प्रिंसिपल एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट वर्क विदिन 2 months, January and February, I sold around 10 ERPs with good amount. So hurdles केवल आपके एक जगह पे नहीं आते हैं। आप जब काम स्टार्ट भी करेंगे वहां भी हर्डल्स आएंगे, बट आपको अपने आप में कमिटेड रहना है, अपना पैशन रखना है, उससे आपको स्टार्ट करना है, पॉजिटिव किया जा रहा है। इसके लास्ट में एंटरप्रेन्योर्स सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट आने के पहले कुछ वार्निंग दे रहा हूं। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इट्स नॉट इजी टू हैंडल। वार्निंग नहीं है, सजेशन है कि आप जब आए तो आपकी कमिटमेंट और पैशन, जो मैं बार बार बता रहा हूं ये 2 वर्ड, ये मैटर करता है आपको सस्टेन करने में, ये मैटर करता है आपको सक्सेस को पाने में। अगर यहाँ पे आप
थोड़ा सा भी उस कमिटमेंट में ढीलापन दिखाएंगे या पैशन में थोड़ा सा कमी रह गया, आप फिर बैक बेंचर बन के रह जाएंगे इंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में। इंटरप्रेन्योर्स बनना है तो ये दो चीज मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये दोनों होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सभी को मैं नेक्स्ट लेवल पे रखता हूँ, वेदर इट इज फेल्योर। मैं जो ड्यूरिंग एक्सक्यूशन या ड्यूरिंग मेकिंग, इंटरप्रेन्योरशिप मेकिंग जो होती है उसके दौरान जो फेस करना पड़ता है, वो फेस तब भी कर पाओगे आप जब आपके पास कमिटमेंट और पैशन। ये दो चीज हमेशा रखो दिमाग में, और कमिटमेंट और पैशन है तो यू विल गेट द मल्टीपल आइडियाज, टन्स ऑफ आइडियाज। ऐसा कुछ नहीं है, छोटा छोटा सा आइडियाज हर लेवल पे काम आता है। छोटा आइडिया से स्टार्ट होता है, फिर वो बड़ा बनता है। और इसमें मैं एक छोटा सा मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। बहुत ज़्यादा लेक्चर आपने देखा इंटरप्रेन्योरशिप पे। आज ये वेबिनार है, और ये इंटरप्रेन्योरशिप पे मैंने लगभग साल भर पहले एक दीपक कनक राजू डिजिटल मार्केटियर हैं, काफ़ी वर्ल्ड फेम डिजिटल मार्केटियर हैं, साउथ इंडिया के, चेन्नई या बेंगलोर के, सॉरी। और मैं उनको फॉलो करता था। बहुत एजेक्ट लिखा है उन्होंने, जो कि बहुत कुछ चीजें आपको इसमें ये करेगा। मैं आपको वो उसके साथ में मैं क्लोज करूंगा इस सेशन को। बहुत कुछ वो कर देगा आपको आपके बारे में, नॉट अदर्स। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आगे आप सोचोगे कि किस किस टाइप के हर्डल्स आएंगे, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है, किस तरह से माइंड आपका काम करेगा, आपकी बॉडी किस तरह से काम करेगी, वो इसको शायद सुनने के बाद आपको समझ में आ जाए। Don't try entrepreneurship. Don't try entrepreneurship. Just don't. Entrepreneurship is a hard drug. Entrepreneurship is a hard drug. It is as hard as it can get. It is as hard as it can get. It has too many side effects. It has too many side effects. Like such first side effect, whatever, as an example he is saying, like you become unemployable. You can't get employment after trying to start to be entrepreneurs. Even initial stage will make you finish for the employment things. But if you have to get a job because your venture failed, if you have to get a job because your venture failed, getting the job is very easy part. It does not matter. Multiple networks, multiple लोग जान रहे हैं, आपकी क्वालिटी को जान रहे हैं, आपके काम के तरीके को जान रहे हैं। They want कि ऐसे बंदे आएंगे मेरे पास, वो दे भी देते हैं। मैंने भी किया है, अच्छा काम किया है। But you can't continue. Just coming on the second one, getting the job is the easy part. Entrepreneurs are good at marketing, including themselves. Being an entrepreneur, because you start उस स्टार्ट से ही आपको मार्केटिंग खुद का करना आ जाता है, खुद की मार्केटिंग कर लेते हो आप। बट द न्यू जॉब कैन होल्ड इटसेल्फ फॉर 2-3 months. New job, if you get due to venture failure or due to some circumstances failure, you can't continue more than 2-3 months. After that, you will have withdrawal symptoms. 2-3 महीने काम करने के बाद धीरे धीरे आपको विड्रॉल सिस्टम आने लगते हैं। और कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं वो मैं बताऊँ। नॉट बीइंग एबल टू गेट आउट ऑफ बेड टू गेट रेडी फॉर वर्क, नॉट बीइंग एबल टू कंसंट्रेट एट मीटिंग्स, कमिंग अप विद द अटरली क्रिएटिव आइडियाज, आस्किंग फॉर द लीव्स, बड़े खतरनाक आइडिया लेके आओगे छुट्टी के लिए। नॉट बीइंग एबल टू ब्रीथ इन डीपली ड्यूरिंग वर्क आवर्स, being fattishly curious about the finances of the company you work for. कंपनी कैसे वो फाइनेंशियल चलते हैं, कैसे कमाते हैं, कितने मार्जिन बचते हैं, क्या होते हैं, वो सारा कुछ आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अलग। बट कंपनी का फायदा कैसे हो रहा है, ये कंपनी चल कैसे रही है, उस पर आपकी मास्टरी हो जाएगी।
constantly scheming about your next big business idea 60% of your work hours. That's a fact. That's a fact. एक बार एंटरप्रेन्योरशिप बनते हो आप, उसके बाद फेल हो पास हो, नेक्स्ट आइडिया दिमाग में आ जाता है, फेल होते ही आ जाता है. उसके लिए थोड़ा सा सिस्टमैटिक होना पड़ता है. थोड़ा सिस्टम में आया, जॉब में गया, महीने 2 महीने सैलरी मिली, फिर धीरे धीरे हालात ठीक हुए, फिर वो क्रिएटिव आइडियाज और बिग होने लगता है. सो 60% टाइम आपकी जॉब का भी टाइम उसी में जाएगा. So my advice is, now according to Deepak Raju Sahab, so my advice is stay out of this drug. It is a drug, so stay out of this drug. This drug does not let you sleep. That's a fact. Once you are entrepreneur, you forget any kind of comfort. Initial, without success, you can't get comfort. This drug makes you prioritize work over everything else. That's we have experienced. All entrepreneurs, I feel, as per my knowledge, everyone suffer this major point, which you have to control very, very well with the emotional intelligence, with your maturity. Very tactically, you have to manage. That's I am going through next. This drug makes you prioritize work over everything else. This drug makes you prioritize, most of your family, friends would think you are crazy. Even after family में कुछ हो रहा है, you don't think, you don't give, as an entrepreneur, one entrepreneur don't give now. आ गए ना. May I continue? Yes, sir. Sir, Alright. please continue. Thank you. So sorry for the time skip. I will take another 2-3 minutes. This drug makes your mind race all the time, and there are no support groups, no rehabilitation center, no entrepreneurs anonymous, no medicines. इसके लिए कोई ऐसा कुछ बीमारी है नहीं, तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट हमारे पास है नहीं अभी फिलहाल. Because this addiction is so time consuming that no one takes the times out of therapy or rehabilitation. Even अगर बनेगा भी तो वो entrepreneurs जाने वाला नहीं है ट्रीटमेंट के लिए in the course manner. And the high last forever. और entrepreneurs की जो एक सोचने का ढंग होता है ना, उसके जैसा हाई वो कोई नहीं होता है. That you can, when you will go through, then you can experience that things until your last breath. Even you are failed, even I am failed, till my last breath it will be high. You will be so intoxicated that you will never wake up from this state. Intoxication इतना ज़्यादा entrepreneurship का हो जाता है. Entrepreneurs जब जो लोग बनते हैं उस चीज़ों को आप हटा नहीं सकते हो. You will be tripping perpetually. You will be tripping. धीरे धीरे मरते रहो मैं वो अंदर टॉर्चर में भी आप चलते रहोगे. This trip becomes your life. आदत बन जाती है. Struggle.
and the life as you know knew it before you were an entrepreneur would cease to exist. आप इंटरप्रेन्योर कभी थे, लाइफ जब तक जान पाएगी तब तक वो सीज हो जाती है. So don't try entrepreneurship, just don't. I'm sorry, I'm not saying don't try. I'm just making you, ये काफी आप सभी लोग वो देख सकते हो, दीपक कनक राजू ये पोएम का सोर्स है. आप सर्च करके देख सकते हो, उनके बहुत सारे बुक्स भी उन्होंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग वगैरह पे. मेरे कहने का मतलब ये था कि ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं. अगर सर लोगों ने इजाजत दी तो मैं शेयर कर दूंगा. आप लोग इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हो. अडॉप्ट इसलिए करने कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. जैसे मैंने बताया इमोशनल इंटेलिजेंस फैमिली के रिगार्डिंग दे वोंट अंडरस्टैंड. सो पहले ही मैं बता चुका था ये सब इस चीजों को. एंटरप्रेन्योर्स लास्ट में 2 सेंटेंस में बोल रहा हूँ. एंटरप्रेन्योर्स बनना है आपको. अगेन commitment and passion on this thing. Go crazy. आपको भूखा रहना पड़ रहा है, आपकी फैमिली डांट रही है, सोसाइटी में आपको पागल बोला जा रहा है, जो भी क्रेजी बोला जा रहा है, इट डज नॉट मैटर. यू हैव टू डू. कैसे करना है, जब करना शुरू करोगे आपको रास्ते मिलते चले जाते हैं. आई एम वेरी मच श्योर. गुड लक ऑल ऑफ यू गाइस एंड थैंक यू ऑल द मैनेजमेंट टीम्स. थैंक्स अ लॉट. Thank you so much, sir, for your knowledgeable and valuable words. Now, I would like to invite our next speaker, Mr. Kamaljit Kumar, founder, Jabros, = and online Padho, Gurugram, Haryana. He has 12-year experience. He is an IT expert and owner of 3 companies and running companies from 10 years. Kindly welcome Kamaljit, sir. Over to you, sir. Hello everyone. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Yes, sir. You are audible. Amazing. जैसा अभी हम देख रहे थे, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और मैं बिल्कुल बिगनिंग से ही कनेक्टेड हूँ सेशन के लिए. और काफ़ी लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, बहुत कुछ मुझे भी सीखने के लिए मिला. मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा. मेरा नाम कमलजीत है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ और कुछ 3 अलग अलग कंपनी ऑपरेट होती है. अलग अलग डिवीजन्स हैं. आईटी एक डिवीज़न है, एजुकेशन डिवीज़न है और हम रियल एस्टेट में भी काम करते हैं. अब यहाँ पे जैसे मैं समझना चाह रहा हूँ, जो हमारा थीम है इस पूरे वेबिनार का, हमने कहा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योर वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो इनोवेटिव तो अपने आप आ ही जाता है. बिना इनोवेशन के एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकता. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जैसे मैं अभी नितिन जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा आज से 20 साल पहले माहौल नहीं था. ये 20 साल पहले नहीं, मैं 10 साल पहले की भी बात करता हूँ. और इवन आज की भी सोसाइटी में अगर मैं अपने गांव में चला जाऊँ या बिल्कुल सबर्बन एरियाज़ में चला जाऊँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बहुत अच्छी नौकरी करेगा. एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल आज भी बहुत अच्छा डेवलप नहीं है हमारी कंट्री में. लेकिन अगर आप में पैशन है, आप में टैलेंट है, आप में करने की इच्छा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं. पिछले 4-5 सालों में एंटरप्रेन्योरशिप को गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ावा दिया है और सोशल मीडिया की वजह से हमने इस वर्ड को बहुत ज़्यादा सुना है. पहले तो जानते भी नहीं थे एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है. अब एक नई कहानी यहाँ शुरुआत होती है कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब आज के लोगों में ये समझ हो गई है कि अगर आप आईटी में कुछ करना चाहते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. बिना टेक्नोलॉजी के तो कोई हो ही नहीं सकता. लेकिन ऐसी बात नहीं है. मुझे ऐसा लगता है आपका जिस फील्ड में भी पैशन है, आप उसी फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं. ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स की बात नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास सेम लेवल का एफिशिएंसी होता है या फैमिली बैकग्राउंड होती है. कई बार हमारी मजबूरी होती है कि हमें जॉब तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी फैमिली कैसे चलेगी. हम फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे बिज़नेस ही करना है. अब ऐसा नहीं है कि आप जॉब में जाके एंटरप्रेन्योरशिप को सीख नहीं सकते. मैंने भी अपने करियर के 10 साल जॉब में दिए, बहुत अलग अलग सेक्टर्स में काम किया, बहुत अलग अलग फील्ड्स में काम किया. सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता था कि मैं कभी ये नहीं सोचता था कि 9 to 6 का जॉब है तो मुझे 6 बजे से पहले 5:30 बजे अपना बैग पैक करना शुरू कर देना है और 6 बजे अपने घर के लिए चला जाना है
उसके बाद मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक नॉर्मल माइंडसेट होता है। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे फील्ड में आना चाहते हैं, आप में पैशन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, आज बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ लोगों ने ऑलरेडी डिग्रीज पूरी कर ली होगी, ऐसे भी लोग होंगे। कुछ लोग ऑलरेडी कुछ कर भी चुके होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में भी बिजनेस स्टार्ट किया होगा, नहीं चल पाया होगा, पॉसिबली है। कभी भी दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कभी भी फेलियर से नहीं घबराना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमने कुछ शुरू किया, 2-4 महीने उसमें लगाए, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा इससे नहीं आती कि हमारा प्रोडक्ट नहीं चल रहा, हमारी सर्विस नहीं चल रही। सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ से आता है कि जो आपके आसपास के लोग आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। आपने आज जॉब छोड़ा, सबसे पहले आपके दोस्त आपको एडवाइस देना शुरू करेंगे, मैं तुमने जॉब क्यों छोड़ा, तुम्हारी तो इतनी अच्छी खासी सैलरी थी, तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा, तुमने आगे के लिए क्या सोचा है, अगले 3 महीने 4 महीने में क्या होगा। हो सकता है कि आप प्रोडक्ट भी डेवलप करते रह जाएं, हो सकता है कि प्रोडक्ट डेवलप हो गया और आप उसको बेच नहीं पा रहे हो, उसके बाद वो आपका और मजाक उड़ाना शुरू करेंगे, मैंने तो तुम्हें पहले ही ऐसा कहा था। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप क्या चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर मैंने किसी बिज़नेस को शुरू किया, किसी प्लेटफॉर्म को शुरू किया, वो फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शर्म से मर जाएं और दोबारा जॉब करने के लिए नहीं जाएं। ऐसा नहीं होता। यू नीड टू बैलेंस योर फैमिली, यू नीड टू बैलेंस योर प्रोफेशनल लाइफ। इट इज़ नेवर इम्पॉर्टेंट कि आप एक ही चीज़ को फॉलो करो। अगर आप सक्सेस हो भी जाते हो, इफ़ योर फैमिली इज़ नॉट विथ यू, इफ़ योर फ्रेंड्स आर नॉट विथ यू, देन यू विल नॉट बी हैप्पी। यू हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ इट। सो इम्पॉर्टेंट इज़ दैट, मैं ये नहीं कहता कि आप कॉलेज से निकलिए और सीधा एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाइए। हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बेहतरीन आंकड़ा है, कहता है कि हमारे हिंदुस्तान में 85% बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो अपना पहला एनिवर्सरी नहीं मना पाते। 85%, मतलब 100 में से 85 बिजनेस ऐसे होते हैं जो विद इन 1 ईयर बंद कर दिए जाते हैं। और बंद करने की सबसे बड़ी वजह होती है उसकी पुअर प्लानिंग और उसके फाइनेंसेस। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप कब तक सरवाइव करेंगे। आजकल मार्केट सिचुएशन क्या है कि बच्चे कॉलेज से बाहर निकलते हैं, कॉलेज में जब लेट से मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, बच्चे जब इंजीनियरिंग करते हैं, फाइनल ईयर होते होते उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। लकीली हमारा सोशल मीडिया, हमारा इंटरनेट इतना प्रमोट हो चुका है कि बहुत कुछ आइडिया हमें वहाँ से मिल जाते हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। उनके मन में आइडिया आता है फाइनल ईयर होते होते कि चलो हम 4 दोस्त हैं, मिलकर एक नया वेंचर शुरू करते हैं और ये बहुत बढ़िया होने वाला है। ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया होने वाला है, लेकिन चैलेंज क्या हो जाता है, आपके पीछे कोई मेंटोर नहीं है। आपको आइडिया नहीं है कि आप जब अपना पैर उस पानी में डालेंगे तो नीचे कितनी गहराई है उसको आप नहीं जानते। आप क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे एक प्रोडक्ट डेवलप करना है, उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में 100 रुपये का खर्चा आ रहा है। मैं क्या सोचूंगा कि अरे 110 रुपये में बेच दिया तो भी मुझे 10 रुपये का फ़ायदा होने वाला है, जबकि मेरा कॉम्पिटिटर उसी प्रोडक्ट को 200 रुपये में बेचता है। मैं 110 में बेचूंगा, सारे लोग मेरा ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऐसा होता नहीं है। अगर आपका कॉम्पिटिटर उसी प्रोडक्ट को 200 में बेच रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। उसका ओवरहेड कॉस्ट इतना है कि 100 रुपये से बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जब हम कॉलेज में होते हैं, हमारी आदत होती है कि आदत कहिए और एक नॉर्मल टेंडेंसी कहिए, पेरेंट्स पैसे भेजते हैं और हमारी हर महीने का हमारा खर्चा चलता रहता है। उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली हमारी कंट्री में है। मैं कहता हूँ आज की डेट में 80% स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से फंड का इंतज़ाम करके उन्हें कॉलेज में पढ़ाते हैं। लेकिन बच्चों को शायद उसका एहसास नहीं होता है। वो एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाते हैं, 4 दोस्त मिलकर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है कि अपना पॉकेट खर्च वो भूल जाते हैं। 100 रुपये का प्रोडक्ट आप बना रहे हो, 110 रुपये में आप बेचने वाले हो, लेकिन क्या आपने इस कॉस्ट को ऐड किया कि 100 रुपये में आपकी टाइम की क्या वैल्यू है। आप जहाँ रह रहे हो उसका रेंट भी आपको पे करना है और आपको अपने डेली एक्सपेंसेस भी बेयर करने हैं। वो भी पैसा उसी बिजनेस से बाहर निकलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपकी प्रोडक्ट मॉडल, किसी भी चीज़ को आप डेवलप करना चाहते हैं, तो आप अपना पर्सनल कॉस्ट भी उसमें ऐड कीजिए। अदरवाइज़ आप विद इन 3 to 4 मंथ फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये 1 महीने में मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आपको तो बहुत अच्छे अच्छे सपने आ रहे थे,
प्रोडक्ट बनाया, अगले महीने बेच देंगे और बहुत सारे बेचें कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता है। ऐसा होता नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, कभी भी किसी कॉम्पिटिटर को कॉपी मत कीजिए। ऑफ कोर्स आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया है तो कहीं ना कहीं कुछ देख कर ही आया होगा। हम आउट ऑफ द यूनिवर्स कुछ भी नहीं सोचते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसी हिसाब से हम उस नया प्रोडक्ट को सोचते हैं। उसको कुछ इनोवेटिव बनाइए। डोंट कॉपी योर कॉम्पिटिटर्स। ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है उसी को हमने बनाया वो बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता। कंपटीशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी फील्ड में। बेहतर है अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद उसको मार्केट में लाइए। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, टाइम। अब हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, किसी सर्विस को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि अपने हिसाब से हम 4 लोग पार्टनरशिप में हैं, 5-6 मेरे और 10 दोस्त हैं, उनसे ही आइडिया लेके उसको बनाते रहते हैं। बनाते बनाते क्या होता है उसमें 1 साल 2 साल 5 साल लगा देते हैं। पता लगता है कि ये तो अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागिए, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने आज कुछ डेवलप किया है उसको मार्केट में लेकर जाइए, उसको अगले अगले 100-200 लोगों तक पहुंचाइए, उनका रिव्यू लीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसको परफेक्ट करके मार्केट में लॉन्च करूंगा तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। और हो सकता है जब तक आप परफेक्शन में लगे हुए हों तब तक पीछे से कोई और आके मार्केट कैप्चर कर लेगा। तो इस चीज़ में कभी नहीं जाना है कि मैं परफेक्शन करूँगा, बहुत बढ़िया बनाऊँगा तभी वो चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आज के इंडियन मार्केट में क्या चलता है कि वीसी फंडिंग। हमारे जो पुराने ज़माने में ये सब सिस्टम नहीं होता था। अगर हमारे पास इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती थी तो बहुत मुश्किल होता था, इवन पेरेंट्स से भी पैसा मांगना मुश्किल होता था अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसा नितिन जी ने भी बताया और मैं खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, हम कोई बहुत बड़े रिच बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। हमने जॉब किया, वहीं से कुछ पैसे थोड़े बहुत जमा किए और उसके बाद ही बिज़नेस कैपिटल को स्टार्ट किया। अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका पैसा कितना लगा हुआ है। अगर आपने खुद का उसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है, आप भूल जाइए आप उस वेंचर को सक्सेस करवा पाएंगे, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू ही समझ में नहीं आएगी। आज की डेट में मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स, मैं गुड़गांव में रहता हूँ और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि हर मोहल्ले में आपको 5-10 लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे मैं नए प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नया करने वाला हूँ। लेकिन होता क्या है कि उन्होंने कहीं से इन्वेस्टमेंट ले लिया, बहुत बड़े कॉलेज से पढ़ा है उन्होंने, उनके पास पीछे बैकग्राउंड है, इन्वेस्टमेंट मिल गया, लेकिन एक्चुअली उसको उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का नहीं पता होता। वो उन पैसों को गलत जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत पैसा लगा देंगे, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पैसा लगा देंगे, प्रोडक्ट डेवलप करने बहुत बेहतरीन ऑफिस बनाना शुरू कर देंगे। अरे पहले अपना प्रोडक्ट तो डेवलप करो, अपने आप को सस्टेन तो करो। वो तभी होगा जब आप अपने खुद के इन्वेस्टमेंट को बर्न होता देखेंगे। जो आपके हार्ड अर्न इनकम्स है उसको आप बर्न होता देखते हैं, या आपने अपने पेरेंट्स से पैसा इकट्ठा किया है, अपने दोस्तों से इकट्ठा किया है, जो आपको एक्चुअली रिटर्न करना है, तब आपको फील होता है कि मैं इसको कितना ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ और कितने बेहतर तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। पहला, आपका पैशन क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। कोई कहता है, जैसे बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं, वो अभी तो मुझे कॉलेज से निकले बहुत टाइम हो गया, बट वो पूछते हैं सर मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ जिसमें ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेरे पास एक्चुअली कोई जवाब ही नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी ये सोच के आईटी शुरू ही नहीं किया था कि मैं कंप्यूटर्स पढ़ूंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वो मेरा पैशन था। अगर आपका पैशन है पेंटिंग करना, आप पेंटिंग कीजिए। आपका पैशन है टीचिंग करना, आप टीचिंग कीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको आईटी इंजीनियर ही होना पड़ेगा और आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में ही जाना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी इस चीज़ को बढ़ावा देती है। अगर कोई बच्चा, आज की बहुत जनरल ट्रेंड है, अगर कोई बच्चा 75 एंड अब परसेंटेज 12th में लाता है उसको साइंस में भेज दिया जाता है। अगर थोड़ा नीचे होता है उसको कॉमर्स में भेज दिया जाता है, उससे नीचे वाले को ह्यूमैनिटीज़ में भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ वाले लोग कुछ नहीं कर पाते। जो भी हमारे लॉयर्स होते हैं, जो भी हमारे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, दे आर मोस्टली फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड। ऐसा नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है या वो कुछ कर नहीं सकते। बस इतना है कि उनको साइंस समझ में नहीं आया और उनको परसेंटेज नहीं आया 12th में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आप अपने पैशन को फाइंड कीजिए, क्या आपको अच्छा लगता है वो कीजिए।
जो भी आपको पसंद है उसी में डूब जाइए। स्टीव जॉब्स को हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने कहा था लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव। पहली बात तो ये है कि जो आप करते हैं उसको पसंद कीजिए, और अगर मजबूरी में ज़रूरी नहीं है कि हम इतने लकी होते हैं कि अपने अपने पसंद के फील्ड में जा पाएँ। अगर मजबूरी में आप किसी फील्ड में चले जाते हैं, जॉब करने की मजबूरी होती है, तो आप क्यों नहीं उसी को अपना पैशन बना लेते हैं। जब तक आप किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं, उस चीज़ को गहराई में नहीं जानेंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करना, किसी बिज़नेस को स्टार्ट करना। या तो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मेंटर होना चाहिए या आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। कॉलेज से निकले और 4 दोस्त मिलके कुछ नया बना लिया, पता है नहीं कि करने क्या वाले हैं, उससे नहीं होगा। आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं। तो बेहतर है कुछ एक्सपीरियंस लीजिए, या अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को जोड़िए जैसे आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, वो आपको बहुत आइडिया दे सकते हैं। आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क है, यूट्यूब है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हम लर्न क्या कर रहे हैं। आप लर्न कीजिए, अगर आपको लगता है कि आप सक्सेस कर पाएंगे, बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा नितिन जी ने भी कहा, हर्डल्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। आपको अभी घर बैठे कोई भी प्लान बनाया बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको हर्डल्स का ही नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। आप जब ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं तो आपको सीधा फर्स्ट फ्लोर की छत का पता होता है कि इतनी ऊंचाई तक मुझे जाना है, लेकिन आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ही जाना होता है। जब तक आप उसमें चढ़ना नहीं शुरू होंगे, आपको नहीं पता होगा कि आगे कितनी सीढ़ियाँ को चढ़ना है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप पहले एक नॉलेज गेन कीजिए, आप एक्सपीरियंस लोगों को अपने साथ जोड़िए, उनसे कुछ सीखिए। नहीं समझ में आता है, कुछ साल अपने आप को नौकरी में या किसी के साथ रह के लर्न कीजिए, एंड देन यू शुड गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय सेशन हियर, द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट योर पैशन। फाइंड योर पैशन, क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आज वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आज ही हम अपना लाइफ क्लोज हो गया, करियर ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप 5 साल बाद भी शुरू कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि डे 1 से आप कॉलेज से निकले और एंटरप्रेन्योरशिप में ही आ गए। आपको हो सकता है कुछ समय और इन्वेस्ट करना पड़े, लेकिन अपने पैशन को फाइंड कीजिए। उसके हिसाब से आप ये सोचिए कि आप अपने पैशन के बिहाफ पे सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। हमारा पैशन था आईटी, हमारा पैशन था एजुकेशन। हमने जब स्कूल्स में एजुकेशन लिया, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को फेस किया। हमने ऑनलाइन पढ़ो को डेवलप किया। ऑनलाइन पढ़ो एक मीडियम बताता है कि बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे एरिया हैं जहाँ बच्चों के पास कनेक्टिविटी तो है, लेकिन उनके पास अच्छे टीचर्स नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो गांव में बैठे हैं, मजबूरी की वजह से वो बाहर नहीं आ पाए, और उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो अच्छे बच्चों को टीच कर सके। हमने ऑनलाइन पढ़ो डेवलप किया कोलैबोरेशन के। दूसरा सेगमेंट क्या था कि हमें लगा कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारा क्राउड ऐसा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। हमने क्या किया, इक्वल साइन फाउंडेशन को डेवलप किया, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमारा पैशन था एजुकेशन, बच्चों को टीच करना, सोसाइटी को टीच करना। अब हम जिस भी मीडियम से टीच करें, या तो हम प्रॉफिटेबल करके टीच करें या हम नॉन प्रॉफिट करके टीच करें, यह आपका पैशन होना चाहिए। अगर आपने अपने पैशन को फाइंड कर लिया, आप सक्सेस करेंगे। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती धकेल दिए गए किसी चीज़ में, ट्रस्ट कीजिए वो आपका नहीं है, और आप बस स्ट्रगल करते रह जाएंगे। थोड़े दिनों में आप कहीं और बिजी हो जाएंगे, फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, एंड देन यू आर फिनिश्ड। आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपका पैशन पता है, आप 10 साल बाद भी किसी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे उस चीज़ में। तो फॉलो योर पैशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैशन के बाद इम्पॉर्टेंट है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके चलिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी ये मत सोचिए कि आज मैंने प्रोडक्ट बनाया तो आज तो थोड़ी मिलेगा, 4 महीने के बाद, 2 साल के बाद पैसे आने शुरू होंगे। ऐसा नहीं होता। डे 1 से आपको पता होना चाहिए मेरा प्रॉफिट मॉडल क्या है, मेरा सेल्स मॉडल क्या है। अगर आप उस चीज़ को बेच ही नहीं सकते तो आप प्रोडक्ट बना के क्या करेंगे। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपका पैशन, आप सोसाइटी को क्या देने वाले हैं, और आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है। फोकस ऑन दिस 3 थिंग्स एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ गुड सॉल्यूशन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। मैं कंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ अपने सेशन को। थैंक यू सो मच समीक्षा मैम फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल टाइम, एंड ऑल ऑफ व्यूअर्स फॉर वॉचिंग मी। Thank you so much, sir. Your presence is very, very precious for us. And thank you for guiding us in such a wonderful way. Thank you so much. Now,
I would like to introduce our next speaker, Mr. Shashank Tiwari sir, founder Hanisha Technologies and 24 Kitchens, Gurugram, Haryana. He has 10 years of international as well as national experience. Project execution, software cycle, business expansion are the key metrics of his work. He has 12 years experience on IT industry. So, kindly welcome Shashank Tiwari sir. Over to you, sir. Thank you very much, Dr. Samiksha. Firstly, I would like to say a thank you to DLS College for giving this opportunity to speak on this amazing platform. Indeed, this is an amazing platform in which we are actually enabling our experience, as well as I can say this is something like an applied experience, because we are not concluding something from the book. We are only concluding the things which is actually we people have learned over a past good decade amount of years. So from the bottom of my heart, I would like to say a thank you to the Chief Patron, Mr. Bashan Sharma, Principal, Mr. Pratap Pandey, Director, Mrs. Nisha Sharma, and my resource speakers and friend Christian, Laura, Nitin, Kamaljit, convener Neha Bihar, and Sumit, who is handling the team from the backend. From the backend, if I would like to say that what kind of journey I have been followed from last 15 years. So I would like to say that it is something like I have been born and brought up in a family which is like a privileged family, but they are actually dedicated to government officers kind of things. They were nowhere related to the portfolio of having a business, though my maternal uncles would, but uh, as per my family, they were nowhere related to the business. So the first intention, what comes to their mind is something like they are not obeying that, what the hell I can do that with the business, because they won't be having a kind of an experience. Apart from these many things, I have been into industry for almost last 12 years. The one I had thought, uh, I I actually follow a one momentum that I need to grow on. So I started my career working as an IT support engineer. From IT support engineer to being IT manager, and again an infrastructure manager and a project head. And finally, whenever I was a project head uh, for a startup, I thought, now what next? Because I'm into a project industry from last 15 years, and I don't think so there is anything left over from last 15 years to grow. Because after project manager, what better can you be? It is something like you have to be either a CTO of any company or something like into a management level. But whenever I thought that I have to be a CTO of the company, why don't I have something of my own? At that time, something comes over my mind, let's start something of my own. Accidentally, I can say that something happens over my foot, and I thought, let's say a retirement to the job profile and I start something of my own. So at the initially we started something like Hanisha Technologies, which is an IT based firm. We have office in Raipur as well as in Gurgaon, and honestly we are trying to enable this office in UK as well. So our plans are something around 2021 we are planning to enable one office in UK as well. So these are few pipelines to which I would like to disclose. And after that, whenever the lockdown comes into picture, it was a more or less kind of thought that either I can close my business because people don't have a money for their essentials. What the hell they will pay for the software industries and so on. So at that initial background, we have a thought process. We kept ourselves quiet for at least 7 days. And after 7 days, I thought, let's start something which is actually a need of the market as of now. So we started 24 kitchens. Eventually, we started with the WordPress site. I mean, I am pretty honest and clear to my thought that, like Mr. Kamaljit said, like Mr. Nathan, so on with Christian and Laura, they used to say that whatever you have in the mind, just start that. You wouldn't have to wait for a perfect time to do something. So I started something like that only. So I started something like, let's start 24 kitchens, and we will see what will happen to the next. Either we fall down, we will learn. Either we succeed, we will grow. That's a simple thought process to which I have been followed from last one decade, and I'm following that as well. So these are my entrepreneurial journey. So I'm an entrepreneur for almost 2 companies now, though it is not too big as of now. The way Mr. Bhushan Sharma and Sunil Marda sir has mentioned like that, but it's not too big. But I would like to share one presentation in that side. Let's give me one. I hope you people can see the presentation. All right, so I'll start with the startup. I normally say it's not actually a startup, it's something like a startup, because a startup is something like whenever you start your own company, it is something like a startup.
Either you start today, either you start tomorrow, it's a startup, because one day one company has to start, which is something like that. The guides to which you have to follow, it's not actually a guide, this is something like my applied knowledge to which I'm sharing here. It is something like the 5 topics to which you have to denote yourself is why, who, what, how, and when. These are the few things to which you actually need to understand that if you have think over these 5 topics, you can of course see it over like I can be an entrepreneur, or what are the challenges for being an entrepreneur, something like that. All right, so we'll start with why. The reason for you for being, what problem do you gonna solve? See, you can't solve any problem for the society unless you actually face it. It's something like a pain. The more pain you will face, you will actually able to solve the problem in a much better way. So start solving the problem you face first. On the starting from your home or friends nearby, because so that you'll have less fear comparatively of different personalities. On the third part, I can say ideate the process regularly, which is something like you need to see on your process on a regular part. Understand and learn from your mistakes. The more you learn, the more you understand from your mistakes, the more better you will be, because uh, collection of mistakes is called experience unless you learn from it. If you'll not learn from it, you will be something like, as Mr. Kamalji said, 85% of the companies slow down on first year, so you will be among one of them. So perhaps you have to understand that I need to learn from my experience and make it collectively to one experience. You have to define a process to follow. You need to be very sure that what kind of process am I supposed to follow. And rather than having assumptions on your mind, you need to understand the actual needs and implement accordingly. Because for an example, you face a problem on your own, you think that this is my problem, I'm going to solve this for the society. You need to understand it very well that this is something like a problem for the society, or this is something like the problem I am only facing. So these are few points. There is something like, which is, this is the line I normally believe on everything. It's something like 90% of the people in the business fails because they only think to start their business, but they never do it. It is something like the standard they actually used to follow. They keeps on thinking 2021 I'll be a millionaire, I'll start my startup. Uske baad they again think it कि मई में start करूंगा, फिर lockdown आ गया. They keeps on raising an excuse to themselves, and 90% of the business got failed within ideas because they actually just think to have an idea, they never implement it. So implementations are equally important. Unless you have an idea, you have to implement it the more concretely. The more concrete you will be, the more better the idea will be. Who? The founders. Do you have the entrepreneurial skills needed? So these are, there is no substitute or there is no standard mechanism in which you think that yes, I have an entrepreneurial skills or not. There are few things to which you have to ask yourself, like you have to speak to yourself that yes, I can be an entrepreneur, or I can be an entrepreneur with developing few qualities, and what are those? Feel free to ask the questions to yourself, because you have to raise a question to yourself before people raise you, and after that lead from the front. You being an entrepreneur or a lion from the segment, you can't be like, you can't be live with the fear. Like you have to lead from the front. Whatever the team is running, they can only actually follow you, so they have to be behind you, they can't be in front of you, so you have to lead from the front. Apart from that, there are a few topics like understand the process. You need to understand the process, that what kind of process are necessary, what kind of stages we are following, and what kind of services we have to oblige. Clear with your projects and its outcomes. See, as Mr. Kamaljeet and Mr. Nathan said, that the project comes, but you have to understand and be very clear with the projects. See, people will actually raise a questions to your projects, and this is something their mindsets will be. So you have to take a risk. You have to understand your projects, and don't afraid of its outcomes. You have to believe that this is my product and it will give outcome not today, but tomorrow. Take decisions and be a decision maker. Since you are an entrepreneur and you are something owner of your company or a founder of your own company, there won't be any decisions apart from you. You have to be a decision maker, or you fail down, or you learn, or you do anything, but these are the decision making factors that you have to develop on yourself. Be Make yourself very much famous in regards to take a risk taker. Like uh, we normally used to read the
bibliography of Mr. Dhirubhai Ambani. We never read for Mukesh Ambani, for Anil Ambani, because the Mukesh Ambani and Anil Ambani, they have got a succeeded business which has been made by Mr. Dhirubhai Ambani. That's something like he is very well famous for being a risk taker. He has to take a risk from Yemen, created something of his own, and we now know it like Reliance or something. So be a risk taker. And as Mr. Sundar Pichai said, dream big. You have to aim enough to get fallen down, because either you fall down, you learn something into the system which actually makes you succeed, not today but by tomorrow. So these are few examples that we have to enable yourself, and the skills which you need to develop on yourself. There are few more things, like what, like we said, what you have to understand, and very much understand of the agendas and the uniqueness. What set of parameters or the subjects your competitors are. So you have to understand, define uniqueness of your projects. Nobody listen to your thought unless you have something unique. Like in 24 kitchens, I'm giving just as an example because we have been already spoken for 24 kitchens and we heard of that values. So in 24 kitchens, we have a uniqueness. So, and what kind of uniqueness is stuff that we need to give the deliveries in 2 hours. So that's something like the uniqueness we need to follow. See, every business has a competitor. There is no business without a competitor. We can have CTS, we can have Infosys, we can have TCS, we have Wipro, Genpact, and many more big companies. They are focused, dedicated on IT. They have competitions between each of them, but they must be having some kind of uniqueness which is kept on going to them, so that they are more than, I think, hundreds year and above companies. So you have to have some unique part of your industry. You have to be bearable with the market situations. Like all of a sudden lockdown comes into picture, you have to bear with that, because these are natural stuff which can comes over the time. It has come today, may it come by tomorrow. So you have to be very much competent with that. Don't worry for the competitors. You have to faith on your vision. See, there are a vision which you have to follow. You wouldn't have to change your vision with your competitor's mind, because he is having some different competitions or segments in mind, but you have a different vision to follow, and focus on one result at a time. This is my personal opinion. Rather than showing or creative yourself, be a resultive for one at a time, so that you can actually focus 120% on dedicated on one projects at a time. How exactly the strategies and the implementation which takes place. See, for an example, you have an idea, but you have an idea, right? What's next? You have to ideate the process. You have to learn with the process that yes, this is an idea. I need to tune that idea. That now the tuning is comes place, that what are the revenue models, how we can sell this, how we can sell this idea to the clients, to the industries and the other segments. Once you're very much done with the ideation process, you're clear with the vision that what actually we are supposed to do, you have to start planning the ideas with a team or an alone. That depends on your portfolio, but you have to plan the idea. Once you have planned the idea, because you have an idea, you have ideated that, you have planned that, now it's a part that you need to process the ideas. And once you're done with the whole of the processing, it is something like an implementation comes into picture. This is the day where you are actually be known yourself as an startup guy or a founder of a company or an entrepreneur or something. You have to stand out with your ideas. Like, trust on your team. People will say whatever, you have to trust on your team. Result will speak everything, because everybody, everywhere the outcomes matters. It doesn't matter even, to be precisely very honest with you, I have done my engineering on 2008 and I have nearly 15 years of experience now, on owner of 2 companies. Till today I have not given any companies my degree, and even I have picked it from the university, because the result matters. Nobody asks for the degree, nobody asks for any stuff, but that doesn't make that you will not learn. You have to learn. But degrees and educations are equally important, apart from you have something over your faith mind. So you have to listen to your mind first and your degree second. So this is what I believe. That's no personal interest, but this is something I believe and I obey like that. Failures are like lessons. Learn from your mistakes and convert it to an experience. As I said, conversion of your mistakes is like an experience, and be accessible to anyone. People will not obey you. This is for sure. I can explain you. People will never obey you. Your team, your friends, your colleagues, or anyone. They will actually never obey you. They will only follow the process you have been following. They will follow you. Implement yourself before
first before implementing to others. You have to follow the process, because जब आप अपना ही product use नहीं करोगे, अपने ही product की आप accessibility को, functionalities को use नहीं करोगे, तो how can you are actually thinking yourself that people will use my products? So this is the thing we have to understand. Let's make an example. You have been implemented over a process. You have now called yourself as an entrepreneur. So there are few things. Follow the amendment practice. There is no product which starts from the best of its first day. It has to start from MVP model, which we normally used to say in our IT language, minimal viable product, in which one business cycle has to complete. For example, there is one, you build a very small product, like in 24 Kitchen, we started over a website. We see, the result is coming, no worries, we can move ahead with an application. We see an application over Android. Now we are planning to have an application for an iOS too. So these are few things to which we all have to keep in the mind, that nobody starts, like Mr. Kamal just said sometime before, कि बहुत सारा पैसा उठाया, invest कर दिया, और उसके बाद फेलियर से डर गए. सो बहुत सारा पैसा उठाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक छोटा सेगमेंट पकड़िए जिसमें आपकी पूरी बिजनेस साइकिल कंप्लीट होती है. उस पूरे बिजनेस साइकिल को रन करिए. उस बिजनेस साइकिल को रन करने के बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे मार्केट से क्या फीडबैक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं जिसको मुझे इसमें फुलफिल करना है. सो प्लान योरसेल्फ, keep a planning what next pipeline के features ready होने चाहिए. Like you have to have a one set of goals that these are the pipelines features you have, which we need to add in our product, maybe today, maybe in 1 week, maybe in 1 year. That depends on your choice. Implementation has to be in bits and pieces, something like that. I said MVP model. And monitoring are like reports, insights, and a demonstration of a prioritizing future efforts. Like there are, you implement one product over a time and you receive hundreds of feedback. So there is no cycle in which you can actually add hundreds of features at once. You have to deliver the things in 10 slot or a 15 slot or something like that, depends on your team's time and something like that. But try to deliver the things in bits and pieces. Like in Swiggy or Zomato, you keeps on, or not exactly Swiggy and Zomato, you can see in your mobile application something keeps on popping, like an update is necessary. So that update, what is that update? That update is something like something comes over the mind. They have released some set of different framework to which you need to update on yourself. So these are the things which I actually think that we need to move on. Apart from these things, there are what define your success. What define your success? This is something like my only experience that I'm sharing. It's something like drive, discipline, adapt, and authenticity. You are driving a company, lead from the front, drive the project by your own. Either you have to pick up a cup of a tea or a coffee or something like whatever, no worries with that, because this is something like you are actually living for your dream. And all the other people's, maybe your colleagues, your supports, or any other people are actually supporting. They are not living with their dreams. You are living with your dreams, and they are only supporting to your dreams. Apart from this, discipline. You have to start a process to find a discipline that you need to, whatever you have to do, it has to be done, sorry. So one discipline we have to follow. Adaptability. Open to adapt. See, you are building a product, of course you are going to use that, but it has to be used from the core users. To adapt from the features, don't think it like, don't stuck to one specific, that these features or this framework is never ever needed in this product. Open to adapt the new things, prioritize them, because at the end they are the core users of your product. You have to value their inputs. And authenticity, be a decision maker. Everyone has their own views and perceptions. You're not here to satisfy every individual. This is something like you can't satisfy hundreds and crores of people, because if you're actually able to satisfy hundreds and crores of people, there won't be any competitors in the world. There is no bug, there is no problem with Swiggy, but then there is also a Zomato comes into picture. Same goes for the Zomato. There is nothing like a Zomato, but there is also a Swiggy. So they have nearly serving 50 or 55 or 45% ratio to the food industry nowadays. But they both are origin, both have seed funding and good capitals, but they exist. So it is something like everyone has their own choice of business. Some has better UI, some has better service, and something like that. That depends. But be a decision maker. You can't satisfy. This is something like a very applied thing I'm saying to you. You can't actually satisfy to everyone. This is something like my favorite one.
blueprint of your dreams. You have to write a dream. You have to write your business plan or a dream, whatever you say, paste it over a daily list. Book it to your mobile wallpaper, book it to a laptop wallpaper, computer desk, paints, everywhere, wherever you are looking this to every day. Put that things over one certain of mind that it has to happen. Like, and most interesting fact is, even if you want to disclose, you can disclose it to the market. Like, for example, uh, we are going in UK in 2021, because maybe you will forget all those things. People will never ever forget you, and they will never ever let you to forget those things. आप भूल जाओगे, आपको याद रहेगा हाँ ठीक है उस समय सोचा था बट अब प्रोग्राम चेंज हो गया, बट लोगों के आपके वर्ड्स हमेशा आपके लिए रहेंगे हाँ भाई यूके में ओपनिंग थी अपनी कंपनी दिल्ली की बंद कर दी है. सो ये कुछ आपके माइंडसेट्स होते हैं जो आपको कभी जीने नहीं देंगे. सो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह जिस जिस जगह को आप सुबह से शाम देखते हैं हर जगह पर ये पोस्टर लगा के रखिए ताकि ये आपको सोने ना दे. बिकॉज आपकी आंखें बंद होनी चाहिए तो वो आपको सपना दिखना चाहिए, और जितना आपके पास एग्रेसिव और प्रोएक्टिव रहेंगे तब तक ही ये सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे. डोंट कम टू ब्लू प्रिंट योर ड्रीम समथिंग लाइक कि 10 साल बाद हम ये होंगे, बिकॉज दिस इज टू वे लॉन्ग. उस समय ऐसा होगा कि आप लोग भी भूल जाएंगे क्योंकि 10 साल किसी को याद नहीं रहेगा. बट से इट लाइक फॉर 1 ईयर हम क्या करने वाले, सो व्हाट वेयर आर वी गोइंग टू. These are two standard topics to which I have been learned from my mentors. You have to have 2 years of projection and 5 years of projections. I normally called it short-term goal and a long-term goal. If you have a 2 years of projection, which is like a short-term goal, decide and make a list of your goals, pen on a paper, any application, green shot, wherever whatever the application you would like to use, move ahead with that. And that in the time frame, have a habit to tick it like a done to them. The more you take the more you take to your goals, it actually boosts an implicative confidence on your mind that yes, out of 10, 5 tasks has been done in for the 2 years. The confidence you will receive, it has to be done. And I honestly say, saying, looking all those 2 years and 5 years goal, uh, unless you have a goal, you are actually nowhere into the market, because आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है. You are actually driving a vehicle, but you're not knowing the destination. जाना कहाँ है? There has to be one goal for 2 years. There has to be one goal for 5 years. 5 year goals is something like products. It's like for you have 2 years of goal. Once you're done with the 2 years of goal, the 5 years goal will actually give you much more confidence that yes, 2 years goals has been finished. Now it's time to plan for my 5 years goals. Spread your goals to everyone. The more you spread, the more energetic you will be, because you may forget your goals, but people will not ever let you forget those things. So spread it like an achievement, the one I said before. Remember, not everyone is working for money. Like Ratan Tata sir, Bill Gates, they are not working for money. Honestly, they have denoted everything. They have given charity to their whole soul, whatever the income they have, but they are working only to their goals. So I think not everyone is actually working for their money. Some people are, but in the initial stage we are, of course. But with the later time, you have to think that you have to work for your goals. When? The perfect time. I'll conclude it here. There is no perfect time for anything. Remember Ratan Tata's thought, there is no right time to take a decision. I take decision and make them right. You have to follow that practice, because you keeps on thinking आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, और वो आज कल और परसों कभी भी नहीं आता. So इसलिए don't think too much that कब perfect time होगा, whenever the perfect time would be there. So are you ready to start? Say very loud and clear, because you're going to live with your dreams now. So I'll conclude that my presentation at here. That's something like my experience I have been taught to you. And at last, I would like to say thank you, DLS College. Thank you, everyone. A special thanks to Mr. Bhushan Sharma and Sunil Marda, sir, for addressing 24 Kitchen, which is actually a local grocery delivering agency. They have made it something like to a international forum as well. So I was not knowing that this small local product is gonna loved so much. I say by heart thank you to everyone for the time they have been given to me. And at last, I just want to say one thing you people have to remember. Entrepreneurship is an attitude. Ownership is a mindset.
You have to follow an entrepreneurship is an attitude follow. Don't follow a mindset of an ownership. Follow a dedicated process for being an entrepreneur. That yes, there is an attitude to which you all have to carry, because entrepreneurship is an attitude. Ownership is just a mindset. Thank you. Thank you, DLS College. Thanks for your time. Thank you so much, sir, for such a wonderful presentation and sharing your wonderful views and opinions toward entrepreneurship. Now, the session is open for questions. Hi. Hello. Hi, Laura and Christian. We have a questionnaire for you. So there are few people who would like to understand what are the actual challenges you have been seen whenever you have been migrated from Colombia to a UK. They might have to understand the process or the difficulties you have been faced from migrating to your business from one country to another. These are the questions actually for you. For Christian. Yeah. Chris, the question is for you. Let me see if Chris. Hello, Chris. Chris, you here? Can you hear us? I think he's muted, but I can respond if that's okay. Yes, ma'am, you are audible. Okay, so the challenge, there are several challenges. The first challenge is that on top of everything that you have to figure out for your business, you also have to figure out your paperwork, and you have to figure out where are you going to live. You have to figure out how are you going to settle down in a new environment. So one of the main challenges is facing a place you don't know and an environment you are getting adapted to. Language as well, even though we spoke English, depending on the areas where you go, they may have some sayings or accent or several things that you have to learn. So it's a lot of learning while you're worrying about your enterprise and you're learning about it as well. So one of the challenges is how you manage those things at the same time. Visa is also a challenge in the sense of you have to be very cautious on your paperwork. So what are the statements? If you're a self-employed, what's the type of visa that you have? What are the rights that the visa gives you?
for how long do you have it, what do you have to achieve in order to be able to extend the visa. So for example, for us, you have to be accepted into a program, and you have to have some like a institution that says that your idea it's innovative, so they can sign a letter for you and you can apply for the visa. And with that visa, you have to show that you have enough resources in order to live in the country, whether because you have the resources in your personal account or because you have someone else that is giving you money because of the idea. And then that visa, in the case of the UK, lasts for 2 years. And then after the 2 years, you have to prove investment of £50,000 to get the visa extended for other 3 years. And after those 3 years, you have to show other type of results in order for you to be able to apply for residency. So the first challenge is to understand how it works and what is it that you have to do and achieve in order to stay in the country and keep evolving. The culture, it's another high challenge, and also the network. So to make business, you have to be in touch with people, because at the end of the day, business is about people and about the opportunities that you get when you talk to someone else or whenever you're selling your idea. And most of these connections have to be based on trust. And it takes time to build trust. So whenever you're an international, you come to a new country with no network, and you have to start generating your network. And that takes time, because you are competing against people that already have a network. So they already have family and friends that work in several corporations, so they can easily introduce you to other people. But for an international, you are brand new, really, with everything. So if you're looking, like one advice I would say, if anybody is looking to go into another country, is to start generating connections ahead of time with your idea. So LinkedIn is an amazing place to connect with people. And that's the best place where you can start making connections and talking to people, having some meetings on Zoom, things like that. That whenever you get into that country, you already have a network established. Because for us, it was right after the masters and start generating the network at the same time. And the challenge is to manage so many things at the same time: culture, language, building your network, finding your visa, building your funding. How is it going to be? Because in entrepreneurship, at first you're not going to get funding, and it's very hard to get the first clients. So how do you manage with all of that? Yeah, that's what I will say. Thank you, Lara. Thank you for your inputs. I think Christian is now on mute as well. So Christians, we also want your advertisement too. Thank you. Sorry, I was not able to mute myself. And I think I want to follow up on the last thing that Laura said about the networking. And I think there is something that what I was saying before about the community, right? And it's that when you are an international in a new setting or in an entrepreneurial setting. So for example, when we were in the accelerator, we were discussing that just last week and this week with the organizers of the accelerator, that the struggles that you have are completely different than the rest. So we were in an accelerator where everyone else was from the UK. We were the only ones who were international, right? So their challenges and their struggles were completely different. So we were telling them, oh, we need to figure out where to live. We need to figure out how to connect with these people. They were not understanding, like, why do you need that? Like, don't you have that figured out? So your whole setting is completely different than the rest. So it can be challenging, or you need to be aware of that cultural difference, right? That you're gonna arrive to a place where everyone else already has roots in there. They already have their family, their friends. They already have a network that they have built during their whole life, and you have just came here a year ago or 6 months ago, or as we did in Northern Ireland, just 1 week into the accelerator, and we were just starting to work on the idea. So I think that
the challenge that I have seen that is the hardest is that one, that your circumstances and your situation is completely different than the rest, and you need to be aware of those differences. But after being aware of those differences, you don't need to be afraid of asking for help. So another example, we needed to find a house once we arrived to Belfast, to the place that we're going in. And after I explained to everyone what I was going through, the whole, I mean, there were like 20 people helping me trying to find a house in Belfast. They really wanted to help me. And that's what happens in an entrepreneurial community. They don't see you as a competition. So don't mind asking for help. Like just do it. So when I just told them the situation, I was completely open about it. They were all helping us, like, don't get a house here, get it better here, it's cheaper here. And how do you know how to pay for electricity? Do you know? Those are the struggles that for everyone else, they were like, this, I mean, everyone knows about this, but I had no idea how to pay my electricity and my water in a new place, right? So all these struggles, you need to be aware of them, but at the same time, after being aware, is just reach out to the entrepreneurial community. I mean, not even other place, to other entrepreneurs. They will be more than happy to help you because they will understand the struggle that you're going through. Sir, I have a question for Mr. Kamaljeet Kumar. Is he there? Mr. Kamaljeet? Hello? I have a question for Mr. Kamaljeet Kumar. Sir, are you there? Okay, I think he has left. I'll post him the question. Actually, I wanted to know about online Padho. I think it's an online platform for studies. So I just wanted him to ask how students and faculties can connect in that platform. Okay, if he's not there, thank you so much. Over to Samiksha. Thank you so much, everyone. And I would like to invite all our resource person on screen and all our participants to on their video. So please kindly on your video for wonderful photograph. Dear participants, kindly on your video. Okay, thank you so much, everyone. Now I would like to invite Dr. Neha Bihar Madam, Coordinator NAC, DLS PG College, Bilaspur, Chhattisgarh, India, for vote of thanks. Over to you, Neha Madam. Thank you so much, Samiksha Madam. A very warm and graceful evening to all our most valued honorable chief guest, eminent speakers, and dear participants. It's my privilege to propose a vote of thanks speech and acknowledge the contribution of those who worked really hard to bring this e-conference from thought to action. We have received a registration from 357 participants and about 121 participants joined, and they were with us till the end. For this event, they made it a very successful event. On the behalf of organizing committee, I extend a really hearty vote of thanks to our chief guest, Sri Sunil Mardaji, proprietor Gotham Plastic Industries and Secretary Chhattisgarh Small and Ancillary Industries Association, Bilaspur, Chhattisgarh, India, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear from your thoughts
and this will surely be going to encourage us in our future. Your words on choosing fields in entrepreneurship will definitely help the young minds. A big thanks to Mr. Christian Hoyos, co-founder NetMinds Belfast, UK, and Miss Laura Bernal Vargra, co-founder of NetMinds UK, for very frankly speaking their first-hand journey about entrepreneurship. Mr. Nitin Ranjan, founder AI Event and Business Consulting, Patna, Bihar, India, for explaining pros and cons of entrepreneurship. Mr. Kamaljeet Kumar, founder EqualSign, Online Padho and Zebros IT Services, Gurugram, Haryana, for practical approach towards entrepreneurship. Mr. Shashank Tiwari, founder Hanisha Technology and 24 Kitchen, Gurugram, Haryana, India, for very nicely explaining through PowerPoint presentation about Startup Up Guide. Thank you so much, sir. Your thoughts have enlightened our minds and have shown us a new path. My gratitude to all the speakers for gracing the occasion and sharing their opinions today. It has really motivated young minds for entrepreneurship. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires effective planning and then execution. We have been fortunate enough to be backed by a team of dedicated staff of the institution and headed by our source of inspiration, Shri Basant Sharma ji, and Director Madam Srimati Nisha Sharma, Madam, DLS PG College, for always supporting and facilitating for such events. A big thanks to them. A special mention to our respected principal, ma'am, Dr. Ranjana Chaturvedi, and Vice Principal Shri Pratap Pandey sir, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as pillars of strength. I would also like to thank the people who worked behind the scene to make this event happen. Special thanks to Umesh Yadav sir, Rakesh Dikshit sir, Rajnish Srivastava ji, Sunita ma'am, Satish Goyal sir, Upadhyay sir, Mr. Sumit Kumar Dubey, the technical person, Tishi Tiwari, Mahesh Jangde, Nitish Sharma. I'm immensely thankful to Dr. Samiksha Sharma for her effort towards anchoring of the program, and Sanskriti Shastri for Saraswati Vandana and Rajya Geet. I also extend thanks to all staff members for their cooperation and support to print and electronics social media, as the program was live on Zoom as well as in YouTube parallelly. I also thanks to all people who were directly or indirectly involved in this program. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Chhattisgarh. Now I would declare the end of the technical session and request everyone to stand for our national anthem. Thank you so much. Over to you, Samiksha madam. Thank you so much, everyone, for being with us. And thank you so much for attending this e-conference. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।